Uh, Good afternoon, friends. We welcome to each one of you in this Union Budget 2022, in which we are going to discuss direct tax and indirect tax amendment made in the Taramanji. And we have with us our first session expert, Madhukar Hiregange sir. Sir, welcome to you on this platform where we are continuously providing knowledge for more than a decade and continuously organizing webinars and other discussions. And today we are discussing here whether direct tax or indirect tax, what are the changes, and we are also having CA Ashish Chaudhary ji, partner in Hiregange and Associate. And second session expert, CA Advocate Kapil Goel ji will join us at 6 p.m. So we will discuss then direct tax amendment. In next 1 hour, we will discuss latest what the GST right now and what are the amendment and what are the latest study we need to do in this GST. So we welcome to each participant on YouTube. About Madhukar sir, he is renowned faculty in the field of indirect tax. He was the Central Council member of ICI. He was the chairman of Indirect Tax Committee when the GST was implemented. So he has the vast experience in the field of GST. And I straightway request Madhukar sir to give insight about the GST amendment and GST Aastak. Over to you, Madhukar sir. Thank you, Sumit. Very nice of you to have invited me and Ashish for taking the amendments in indirect taxation in the budget. This budget, is nowadays becoming more and more redundant as far as indirect tax is concerned. Because during the year, every year we have more than 100 amendments. So we have around 5 or 6 mini budgets before the budget comes. And in this budget, they have made only a few changes in the law. They have actually taken forward many of the difficulties which were faced, the procedural difficulties. And I would say that they have attempted to solve it. As we discuss further and analyze, you will come to know to what extent the government has been successful in solving this. I thought that it's very important for all chartered accountants to get a bird's eye view. Sometimes in this form, looking at tables and looking at notifications, we forget sometimes what exactly this GST is about. So when GST came, it had a couple of, I would say, 3 major objectives. The first one was to broaden the tax base. That means remove a lot of exemptions which are there. And I think the government has fairly successfully kept on doing this on a regular basis. Only thing is that they missed out in one particular aspect. All of you are aware that there was an exemption in central excise of 150 lakhs. And in this 150 lakhs exemption, there was a concept for clubbing of entities run by one person or a family in tandem. That means they're actually doing it together. They just have different PAN numbers and different excise registration numbers. Many times these entities used to be next to each other or behind each other in the same road. That type of entities were there. And these multiple entities were attempting to claim 150 lakhs each of them. So there was a concept in central excise called the clubbing of entities. This particular thought process disappeared from the law book when GST came. Unfortunately,
the system which is being followed earlier, that is the breaking up entities into PAN numbers, has become more and more subsequent to this GST coming in 2017. But we see that other than removing exemptions, we see that slowly the government is moving to enhance its tax and ensure that most of the services also get taxed along with most of the goods. And they have also looked at the concept of TCS, tax collection at source. Somewhere I think that in the income tax advantage of TDS, they have also felt can be used in GST for the unorganized industry or wherever they find some amount of tax being evaded due to smaller entities, where there are some bigger entities like the e-commerce platforms who are enabling them to provide their services or goods. So I think to that extent, government has been fairly successful in broadening the tax base, except for one flaw in what it has done. The second is that if we see before GST, there were more than 4,000 rates. Each state had 20, 30, 50, 100 rates. Then you had central excise, then you had service tax. So when all these got subsumed into each other, there should have been at least about 200 rates, but government was very clear that it has to have only a few rates. Of course, before GST was implemented, they talked about a single rate for goods and services. But in a country like India, that is not really ideal, and it may not have worked in my understanding. And this is what we had also shared with the Revenue Secretary at that time, Mr. Hasmukh Adia. What has happened is they have reduced the number of rates, no doubt. But every time I see a rate rationalization exercise being done for the rates, we find that the higher rate is being chosen. Please remember that GST was supposed to come and reduce the entire taxation process. The total tax which is applicable on goods or services was supposed to come down over a period of time because of broad basing and everybody in the loop. Also, we saw that the end-use exemptions which were supposed to be avoided, that means that for the same product, depending on who buys the product or takes the service, there is a concession. Those concessions were supposed to end. Unfortunately, those concessions did not end. Mostly the government is supposed to, whenever they make amendments in the law, it's supposed to increase the economic growth in the medium or long term at least. Seamless credit, that is, whatever tax you have paid prior to your supply, that is supposed to be available in full. Nothing should be reduced from it. I think in the 2014 election promised by the late Arun Jaitley ji and also our Honorable Prime Minister, they had very clearly stated that we will have seamless credit. There will be no denial of credit. The old, type of exercise which used to be taken to limit and protect the ITC will not be done in VAT. This is what they had said, that is in GST. However, this is one area which is still a very strong negative in GST. So if I look at it totally, substantially the larger businesses have been helped, and smaller businesses have had to face a lot of difficulty in credit and also a lot of paperwork, lot of, I would say, complexity, even the reportability, reconciliations, and all smaller traders and service providers may not find it possible. Remember that all our taxpayer volume increases, tax collections were supposed to, keeping that in mind, the rate should have been kept to control. We see that the rates have not been kept in control, even though tax collections are increasing.
I think we have a slide on that immediately after I finish this bit. We also see in the last 2 years, GST amendments seem I think I think there is some network issue. Sumit. Yes. I'll put off my video, Ashish, and continue. Yes. Can you take the next one? Yeah. So now we find that the GST department continues to be under high revenue collection pressure from the government of India. The targets are normally not even related to the growth in the economy. It's far beyond that, which is not reasonable. Then what happens? Officers have to take high-handed measures. Many of the amendments are only on curbing GST evasion. We all have to know that, in a taxation system, there will be some people who will evade. But we have to make laws for the people who follow the law, not evade the law. For them, you have stiff penalties. You can have departmental action to identify these people and take quick action, which is not happening. They're finding some fault. They're trying to collect from everybody in the chain. We also see that the draconian powers, which sometimes are misused, and that also if they are misused against the genuine taxpayer, there is a problem. That is our concern. In the initial stages, we were told that petroleum products would be subsumed in GST, but they have kept on avoiding this by giving what nobody can believe. The state is saying that the center is not doing it. The center says that the states are not allowing it. But we know that many states are craving to get this in. And it's the right thing to do because the total tax on petroleum products is too high. It would be possibly around 60% today. And that is leading to huge inflation, which can be avoided. And also, we being not a really rich country, the poor should be taken care. We have to safeguard them. We can't put such high transport costs on vegetables and everything. These rates are quite shocking. Can you take the next one, Ashish? Yeah. There are two aspects which I thought I will touch on, and then I will ask Ashish to continue, then I will only add. One is, which is the direction of the GST Council? Has GST Council become only a rubber stamp of the administrative wing, that is the CBIC? I am not very sure about this, but it looks as if it is so. We are seeing that the focus of the GST Council, forget about the administrators, GST Council itself is only on augmenting revenue and faster collection. In fact, many of the amendments made in the last year are even if something is not due, there is an interpretation problem. Somebody feels that they are under 12%, the revenue feels it's under 18%. Even if 12% is something they have followed for decades, that the classification in central excise was the same. They were doing this, and that particular rate against the classification is 12%. In service tax, it was the same. Even then, just because they think it is 18%, now they are attaching bank accounts, freezing the bank accounts, seizing goods. These are all things which are not good for an economy like India. In fact, in the indirect tax, all of you know as practitioners that many of the chartered accountants never ventured into the VAT area because of the high rate of corruption and absolute lack of knowledge of the officers. Unfortunately, instead of educating them, we find the law is empowering the officers more and more, and they have no accountability. If they pass a wrong order, they destroy a particular industry by seizing goods, seizing its bank account. They are not responsible. Earlier, there used to be provision in central excise called vexatious search, while before GST came itself, it was removed. These are all very strong indications that we are not looking at a very democratic setup.
We are losing democracy as far as GST is concerned. And also rate rationalization, as I mentioned earlier, it should not be only for increasing revenue. It should be to actually fix the problem. There is a law committee where so many things are forwarded. There is a rate fixation committee. So many aspects are forwarded by the GST Council. But who is there in that? Again, that only the people who are the tax officers, the CBIC officers themselves are there in those committees. And therefore, what is it that's going to come? You are going to be you are going to get only revenue biased ideas. GST was supposed to go for a huge amount of refunds, but they are all long been forgotten. We are going deeper and deeper, getting the law more and more complex instead of a simple law. I don't know when is the good day when all this will be remembered. GST Council was supposed to meet regularly. They are not meeting frequently. Earlier, they used to, minutes of the GST Council used to be available immediately after the GST Council meeting. Now only press releases come, which is just 2 lines. We don't know what was the discussion, nothing. Recently, we applied under RTI and we got a reply that the appropriate authority will approve it. When will they approve? How much time they take to approve? 1 day, 2 days is fine. Not months together. The 45th and 46th council, 2 council meetings have finished and they are not even released the 45th council minutes. They are becoming opaque. This is very, very dangerous for the trend. The trend is very dangerous. Even the meetings are not as mandated. So my question to all of you is, you are also, many of you in Delhi, quite powerful. I think you should also take a small step and question whether the GST Council is actually working or it is not. The legislature thought that GST Council will decide matters independently, but actually it is not doing anything independently. It is a tool in the hands of the CBIC. So many states are making objections. Those objections are simply set aside by giving some silly reason. Many times the reasons are silly. I am afraid as a citizen of India that this should not lead to a crisis of democracy and safety for us. Next, please. Last point I want to do a touch on. No, second last point is, these advance rulings which have come. Every time the newspapers are reporting these advance rulings. But are advance rulings proper? The advance rulings were with the objective to reduce litigation and provide certainty in the law, so that people who have doubt can go to the advance ruling authority, get their matters clarified, very importantly, independently. Unfortunately, most of the officers who are there in the advance ruling authority in all the states hardly know the law. I'm sorry to say this. They don't know the Supreme Court precedents. They are not even quoted in their judgments. If somebody comes, a layman comes also, they should say, this is the law of the land. This is the classification which has been there for decades. They don't even bother to look at that. There are legal maxims which are, for decades they have been developed across the world. These legal maxims are not known to them. When we quote them, sometimes when we appear before them, they don't even seem to know what it is. So then we have to tell them this type of a legal maxim is there. And this aids us in giving proper understanding of the law. Most of the officers, not most, I will say many of the officers don't even know that the Constitution of India is superior to the GST law. And anything in the GST law which is not in line with the Constitution of India cannot be said to be the proper law. Judicial discipline, all of us understand, the higher authority, lower authority. Lower authority has to consider the higher authority. But we find ARs, we find officers who don't even bother about Supreme Court. They say this is a different case. Of course, it's a different case. But does that mean that you can avoid following the Supreme Court judgment or a High Court judgment or even a tribunal judgment? This is really sad, this particular part of it. They were supposed to be fair and just. So therefore, all 3 objectives of bringing in this advance ruling authority is not met.
We have bad judgments. Many people say that this is an authority of adverse ruling. Many experts, I'm not talking about the common public. Service has not been understood at all by most of the people in the advanced ruling who come from the VAT background. They have no idea and they have not been taught. This is the worst part of it. And there are so many contrary rulings. One state says yes, another state says no. But wherever you go, you see one thing very clear. Revenue bias has become very clear. And this is not acceptable in an authority which is supposed to give an independent ruling. So the solution is scrap the ARs immediately, including the appellate authority, or you ensure that you continue with a judicial member. Let a judicial member be introduced into every AR in the country. One more thing which is required without doubt is mandatory education in landmark judgments, legal maxims, and the Constitution of India. And very importantly, it should have an exam. Now, in this particular scenario, what is it us, the professionals, chartered accountants who are on this call, what is it that we need to do? We have to become much more vigilant because this law is not reasonable. You can't apply your logic and reason here. You will find something which is totally against logic. Something which is impossible also will be insisted that you do. Because of the tremendous number of changes, you cannot use a old law. You cannot use the old referencer. You have to use the latest law. Keep updated. And in complicated cases, I have found many of the professionals making some basic mistake. They'll call somebody and take an oral opinion. This oral opinion may not safeguard your client, and it will not look good for us when we give an opinion to a client which finally gets thrown out. Therefore, please ensure that today emails are there. Please ask for all opinions, at least in writing with reasons. It should not say, you can't, if you call me, for example, and ask me, Madhukar sir, this printing of these tags, is it service or is it goods? I may tell you it is goods. But you have not shown me the tag. I have just responded based on your question. 99% it is goods, and therefore what I say is correct. But without reason, if you ask, then you don't know why I have said that it is goods and it is at a lower rate. Therefore, please take in writing. At least I should say this is goods because of the following 3 reasons. Insist on everything in writing from the department. This department has also got back to its old ways. Actually, in the GST regime, there was supposed to be a huge distance between the officers and the SSAs. But reality is they keep calling you, maybe from the mobile. They insist that you come to their office. They are trying to bring back the old VAT regime. Everything will be decided by how much bribe you give them, or whether you are getting into a hafta every month, you give them some hafta, and they will not trouble you. Therefore, professionals who are dealing with the officers should ensure that everything is in writing. Officer calls, tell him, please put in writing. Next, very importantly, he doesn't put it in writing. You put it in writing and send it to him on record. That is, you have the email ID, official email is there for all clients, or send it by registered post. See that it is all on record, and share with the higher officer. This is very important. Not only you should write to the lower officer who's asking the question, you can share with the higher officer. Whenever there is some, point like threatening, especially the honest SSCs should immediately represent, saying that this is not the way we expect officers to deal with us. We have been contributing tax and we have been filing our return as per us properly. If there is anything wrong, please tell us, but this is not the way you can harass us. Sometimes if it is more, I hear in many parts of India, it has become quite difficult. Sometimes large-scale registration cancellations are happening. And while cancelling a few evaders, a lot of people who are genuine get cancelled. Their registration also gets cancelled. This is not acceptable. One more way you can safeguard yourself is documentation.
Remember, they are not afraid of you on the phone. But the moment you put a piece of paper which gives why you say what you're saying and ask them to tell why they are saying what they are saying, immediately the entire thing changes. You may be aware, some of you may be aware as chartered accountants, that our office is 33 years old and we have dealt with these indirect tax officers for this entire period and we have never paid a bribe. How have we managed? And we have grown everywhere, in every city we have grown. Not only in South India, even in North India we have grown. How have we grown? We ensure everything is documented and we are up to date. And therefore, I think this is a page, this is a thought process for you. One more point is that you can tell your big SSEs that it is better that a verification be done. You know, GST audit had come. We were certifying 9C. Now they have said that it is a self-certification. But when they do self-certification, are they certifying the correct thing themselves? Or are they going to be getting some notices later? Remember, information available with the government is very huge. And now we are filing so many details, they have so many cross-references. They have artificial intelligence which looks at patterns, which looks at differences. Whenever there is one particular type of difference found, we find that more than 20,000 notices come within 2 days to all the people where the difference is there. Sometimes the officers, especially the intelligence officers, they start acting heavy. They talk about arrest. They talk about closing your factory or your trading place. In case you are forced to pay, please pay under protest. There is a system. All you have to do is pay it. Next day, write a letter registered post saying you have paid under protest because you are trying to buy peace. Very, very important. Last bit I would like to leave you with is, in case of high-handedness, remember, we are not a police state. We are not Hitler's Germany. Whenever there is unreasonable behavior, I would say, number one, escalate in writing to that person and his boss. Nothing happens, escalate further to the commissioner. And in some cases, say they are asking for money also, then instead of saying that they are asking for money, all you have to do is escalate to the vigilance and they will know what it is. Also, I have seen that many times if you meet the higher officers, either the joint commissioner or the commissioner, matter simply dies off. Instead of escalating into a big ego issue and a demand which you will have to fight for years together. This is what I think we as professionals should do in GST. And this slide probably is the most important one. From now on, I will ask Ashish to go ahead and I will join in wherever I feel that I can add some value. Ashish? Yes, thank you, sir. So, in the remaining part of discussion, we are going to discuss some of the changes what have been proposed in the current budget. As Madhukar sir already mentioned that in GST where the council meeting are taking place or otherwise also frequent amendments are being carried out. So typically in budget, only those things are taken up where it pertains to the making change in the law. And those making change in the law are also many times already covered in some of the earlier council discussion, wherein the recommendation are made for the appropriate change in the law. And if you look at the current year budget, the majority changes, whatever have been proposed by the finance minister, those changes are also of such nature which many of those had been discussed in the past in some of the council meeting. So if you look at some of the important of those changes, so first and foremost important change what the government is bringing out is related to input tax credit. And when we look at the input tax credit, and as many of us are aware that from the 1st January itself, already the government had implemented the section 16(2) AB, as per which
a person can take the credit only if the invoices are appearing in the GSTR 2B, vis-a-vis earlier cases where there was a buffer margin of 5% or so. Now in this budget, what broadly if I put before you how this entire new structure government has come out with, I would say a little different structure for the purpose of taking credit also. So as we all recollect, when GST was introduced, there was the concept of GSTR 1, 2 and 3. Now in that concept where the matching was to be at the invoice level, so there were certain sections what were till now part of the law, but those sections have never been used in the practical life because GSTR 2 and 3 has never seen the day of life except the first month. So few sections like section 38 or section 41, 42 or 43 or 43 capital A, etc. So there are few sections which have become redundant with the concept of GSTR 1 and GSTR 3B. So government has, I would say, removed some of those sections from the statute book, and in some of the sections, some important amendments have been made. So if we look at this entire structure, how the law is going to be in terms of the compliance side or taking input tax credit side, GSTR 1 is going to be there. Instead of 2, 2B is going to be there. Till now, it was governed by the rules only with no specific statutory provision in the GST Act, where now 2B is given more or less a statutory form through section 38. GSTR 3 has been permanently omitted. The concept of taking provisional credit also, all those aspects has been removed, and whatever credit is to be taken, that would be final credit. As we all know that the most important or one of the most important section in GST is section 16, wherein earlier 4 until I would say from January 5 conditions have been provided, which are required to be fulfilled by a registered person for the purpose of taking the credit. Those restrictions basically that I must be having invoice, I must have received goods or services, invoice are appearing in 2A or 2B, or the supplier has paid the taxes to the government and I have filed my return. So these were the 5 conditions what were falling into 16.2. Now they have included one more condition, that input tax credit would be allowed to be taken if details of input tax credit in respect of said supply has not been restricted in the section 38. So effectively, even if let us say invoice is appearing in 2B, I have paid to the vendor, I have received the goods or services, he might have paid taxes to the government, still there could be certain categories where despite satisfying all other conditions, because of section 38, which primarily would be dealing with GSTR 2B, because of the section 38, if some of the credit are earmarked as restricted credit, in those cases, input tax credit would not be allowed to be taken. Now, if you look at what are the aspect what they have put up in the section 38. So when we look at the section 38, first they have provided that in each of the registered person would be communicated the input tax credit what is accruing to him. Means they have not specifically mentioned 2B because 2B is would be governed by the rule where it has been provided in the manner as may be prescribed. So in the 2B, the section 38 provides that there would be 2 buckets. Bucket 1 would be for those credit which you are eligible to take, provided all other conditions are satisfied. Second bucket will have all those input tax credit which you cannot take, or you can take only, I would say, if it is within certain permissible limit or so. So today also, if you look at in 2B, there are some input tax credit which are appearing in the ineligible portion of 2B, but presently there is no statutory backup as per which department could disallow those credit appearing in the ineligible portion of 2B. So after this amendment, what they have provided in section 38, these 6 type of categories they have provided,
wherein they have said that if your inward supply falls in any of these categories, then in that situation, it would be earmarked as a restricted credit for you. And once it is earmarked as a restricted credit, then I cannot take the input tax credit of the same. Many of those things they have provided with the power providing that these restriction would be implemented through the rule. So effectively, again, all the things have gone to the rule where it would be in the hand of executives to provide the rules whereby the credit restriction could be made applicable. So what are these various restricted scenarios? First, it has been provided that details of supplies furnished by supplier within specified period of registration. Not clear how this would be implemented. Then supplier has not paid GST for some prescribed period. So here they have mentioned that if supplier has not paid GST for some prescribed period, then I cannot take the input tax credit. So how this I would come to know as a buyer? Again, this would be provided through the rule, through the mechanism. Presently, if you look at 2B, one could find the 3B filing status of the supplier, which could give some insight whether 3B has been filed or not. But effectively, finally, how this section would be implemented, that one could come to know only when the rules are implemented in line with this section. Then it provides that if supplier's GST payable as per his GST R1 is more than GST paid in 3B by the supplier to the certain limit. So let us say if the tax liability reported by supplier in GST R1 is 1 crore, let us say government provide the limit of 10%, that up to 10% it is fine. But this, if 10% is fine, 10% I am presuming. So in that situation, liability paid in 3B should be more than, I would say, out of 1 crore, 90 lakhs or more. Now let us say the supplier has paid the tax liability only 70 lakh rupees. So in this situation, what they are saying that I as a buyer cannot take the credit if my supplier has underreported in liability in 3B beyond a certain limit. It is not only till the output side of the supplier, now they have gone to one more step where what has been provided that if your supplier has taken the credit in 3B, which is more than the credit taken, which is more than the credit available in the 2B of the supplier beyond a certain limit, then you cannot take the credit. This is ridiculous. So what it provides, let us say my supplier has taken 1 crore credit in 3B, and as per 2A, let us say it is again 80 lakh. And they have provided a limit that, okay, there can be 10% variation. Now, in case if supplier has taken the more credit then available in 2B, in that situation, the buyer's input would be disallowed on the ground that it is a restricted credit as per the new section 38. I'm not very sure how all these things are going to be implemented. Even if, let us say, we look at that in some way or other, these things are going to be implemented through GSTR 2B mechanism or with updated information in the GST portal. The question being raised is whether the business of every person is going to be only the ensuring the compliance by the supplier. Would I be more doing the business, or would I be only checking the compliance status of the supplier, not only on his output side, but also on his input side? So these entire the condition what have been inserted in section 38, these are, I think, what was, as Madhukar sir was saying, that the objective was to provide the seamless flow of credit. It appears that here they are making you cry for each of the penny of the credit what you are taking. So again, in the last, they have put such other class of person as may be prescribed, which has been kept as an open category. So effectively, after this amendment, once it is notified, once the finance once this finance bill become the Finance Act, and all these things are implemented through the rule, there are going to be nightmare in terms of the taking credit, where I have to be very much diligent to check out whether my supplier is duly complying with the law. There are certainly few legal issues arising out of this.
few of these aspects could possibly may be taken care of by the government in the rules. But certainly the question is I have been raising that how can I ensure the supplier compliance on the customer side? Is it actually possible to do, or whether doctrine of impossibility court would intervene and would held in the favor of the assessee citing the doctrine of impossibility? Then again, if you look at the precedence in the VAT law and to certain extent under GST, that if supplier is not paying the tax or if there are any defect on the side of supplier, buyer should not be denied the credit. Not sure what the intent of government is. There could be certain fraudulent people in the sector, but because of that, each of the legitimate taxpayer are going to face this burden of ensuring the compliance by their vendor. Impact on the business, we have, I would say, broadly touched upon these aspects because we also have time limitations. So I will not touch on this aspect and move further for the other amendment. Now, one more important amendment, what has been made is where again, I would say, not very sure how it would be implemented. So what has been provided that when we look at the section 16(2), there it provides that I can take the credit only if tax has been paid by the supplier. So till now, we all have been taking a stand that as a buyer, it may not be possible for me to validate whether the tax has been paid by the supplier or not. Now, in addition to that, one more provision in the section 41 has been introduced, where it has been provided that ITC would be liable to be reversed with interest if supplier has not paid the GST. So effectively on the 16(2), a condition is casted on me that I can take the credit only if the vendor has paid the tax. Now, because certain court rulings are there in favor to the assessee, so here now they have inserted another provision to provide that if the supplier has not paid the tax and you have taken the credit, then you are liable to reverse it along with the interest if supplier has not paid the GST. Now the question would be, let us say in this particular month where I am filing my 3B based on the 2B reconciliation and the invoice is appearing and I have taken the credit and I never know that whether the supplier have actually paid the tax till 20th of this month, because supplier would also be paying tax on the 20th only. After a month or so, if I come to know that supplier whether paid or not, so in that situation, if the supplier has not paid, then this provision has mandated me to reverse the credit along with the interest. Now, unlike past where it was more of a whenever department intervene, we have been fighting, but now here the responsibility has been casted on the taxpayer himself to pay this, to reverse this credit along with the interest. Now, what has been provided that you can take back this credit once the tax is paid by the supplier to the government. So why this question had arisen that many times what was happening, the department was asking me to reverse the credit because my supplier has not paid the tax. And let us say I have reversed the credit. Later on, department collected tax from the supplier also. But there was no mechanism available with me to come to know whether department has collected from the supplier. And in that case, the department was enjoying the tax on from the both sides. So here now what has been provided that I would be liable to reverse the credit along with the interest, but once the supplier pays to the government, then I can re-avail the credit. Now the question would come whether time limit of September, which has now been extended to November, whether that would be applicable or not. Here the law is silent, it does not provide anything. But if one could equate it with the 180 days provision where the time limit of September was not applicable, probably one could look at that, yes, time limit here should also not be applicable. But unlike past, now again the onus has been casted on the assessee at the time of filing that where the supplier, it should not fall in the restricted credit. If you have taken the credit where supplier has not paid the tax, in that situation you have to voluntarily reverse the credit along with the interest. So this was, I would say, these were some of the compliance complexity what they have introduced, wherein the target appears to be more of the catching hold of fraudulent
people in the industry, but actually it is going to be more cumbersome and problematic for the genuine taxpayer. Some good part that some time limits have been increased, where we all know that for taking the credit, for reporting of credit note, for amendment in GSTR1, amendment in 3B. Earlier, the due date was September month, subsequent financial year September month, due date of return filing. So effectively till 20th October, I could have taken the credit pertaining to previous year. Now, actually the problem, what used to happen, that if my supplier is amending in the September month return, I also need to take an September month return. So there were many issues. The timing was not high. How would I come to know that supplier has appropriately amended or not? The same point of time, many of the taxpayers, where their income tax audits are being conducted at that point of time, reconciliation or so were done, and where it was found that, okay, some credit might have been missed or some credit not issued, and by that time already September time limit would have got over. So now to overcome these aspects, it has been provided that the time limit of September has been enhanced to 30th November. Important aspect to here understand is, earlier the due date was linked with the due date of return filing for the month of September. So it was effectively 20th October. Now it is not linked with the due date of filing of month of return of September. It is specifically linked with 30th November. Means effectively any of these activity you want to do, you have to carry it out by 30th November. So if I look at 30th November, certainly in 30th November, I will be filing for the month return for the month of October 1 and 3B. So effectively, I would be getting time till the month of October of next year to take the credit, to issue the credit note, to report, to make any amendment, etc. If I'm delaying in filing of my return, etc., where I am trying to do it after 30th November, whether it is return of September, August, or any return, I cannot take the credit at all. So outer limit is linked to the date of making entry on the portal. Any entry after 30th November, you will not be able to avail this extended date benefit. One very good part what has been observed is the, I would say, interest on ITC. Earlier, if we all recollect that section 50 subsection 3 provided for interest, where the interest on ITC was primarily on account of mismatch between your GSTR, I would say 1-2 matching mechanism. Now here what they have provided, that if you are taking an input tax credit, you are liable to pay interest only if the credit availed is utilized also. If it is not utilized, there is no interest. And importantly, they have made this amendment retrospectively. So last time this provision was provided, but at that point of time, because section 42 was in the statute book, which provided for matching, etc. Now when the section 42 has been omitted from the statute, so in that situation, in this section 50 subsection 3 also has been amended to provide that for any reason, if there's some ITC has been taken and utilized, then you would be liable to pay interest only if the ITC has been utilized, and that interest would also be at the rate of 18%, not 24%. And this provision has been made retrospectively from 1st/7/2017. So this is, I would say, a welcome clarificatory amendment in the section 50. There were few effect what have already been given either through the portal or through the rules, but there were no statutory backing for those provisions. So what they have done, that tomorrow it should not be challenged that because of rule ultra-wiring the section or only covered in the portal, some of those provisions could have been challenged. So now they have given statutory backup to those things. So here what has been provided, that you cannot file return GSTR1 for a particular month if you have not filed for the earlier period. Similarly, if we want to file the 3B, then 3B can be filed only GSTR1 is filed. So everything has now been made sequential, where each month 1 followed by 3B, next month 1 followed by 3B. So this entire sequencing has been done that way. Earlier also portal was behaving to some extent in this way. Rules were have been made
to ensure that one period return is filed before filing for the subsequent period. Now, this have been given the legal backup. But the point would always be that because of these things, a genuine taxpayer, but who may be facing some, let us say, liquidity issue, cash flow issue, or some business slump, because of which that person is not able to pay the taxes, not able to file the return. Those people, in those cases, actually one may have no other way but to close the business, the way this entire new mechanism of compliance is provided. Now, there have been made certain changes in the refund provision also. So earlier, this refund from cash ledger was automatic in terms of 1, 2, 3 provision, but with the absence of now 2 and 3. So it is legalized in section 54 that refund of cash ledger could be claimed separately. Then relevant date for claiming refund by UNO extended from 6 months to 2 years. So that is not of that much use. Earlier, if let us say a person is claiming some refund where department feels that that person has taken some undue benefit, so the department officer could have withheld my refund, or he could have deducted that unpaid tax amount before giving the refund. But earlier it was only available, that recourse was available to department only in case of inverted rate structure. Now it provides for all type of refund application, meaning thereby, if let us say you have some liability outstanding with department and you are claiming some refund also, so department will have all power to adjust that refund before against the liability before giving refund. Also, it has been provided that in case of supply to SEZ, earlier there was no specific time limit of claiming the refund. So now it has been provided that the time limit for claiming refund in case of supply made to SEZ would be considered from the date of 3B of that particular month. So if I have made supply to a SEZ unit where I want to claim the refund under LUT of input tax credit, so in that situation, if supply is made today in the month of January, so I would be filing return of 3B in the Feb. So the time limit of 2 years for claiming the refund would start from the date of 3B. So that part has been clarified. There were certain recommendation of the council in 45th council meeting, where whereby one of the provision what was recommended that if you have some cash ledger balance in some of the state, so that cash ledger balance can be transferred to the distinct person. So in that situation, let us say by mistake I have deposited some extra amount in state A, so but there is liability in state B. So earlier I was required to claim the refund in the state A. Now instead of claiming the refund, it has been provided that you can transfer that cash ledger balance from state A to state B to the distinct person. But here the restriction is on the SGST, that I cannot transfer the balance available in the SGST cash ledger. Whatever balance is available in the CGST or IGST cash ledger, that could be transferred to other state distinct person. Remember, this is only for the electronic cash ledger, not for the electronic credit ledger. So you cannot transfer the balance available in the electronic credit ledger. Few other changes like time limit for cancellation in case of composition taxpayer. Earlier, it was provided that if a composition taxpayer person failed to file return for 3 consecutive tax period, then after 3 tax period, his registration could be cancelled. Now, because the composition taxpayer return has been made annual, so if a person does not file annual return, then once 3 months expire from the annual return, annual return filing date, if a person does not file, then his registration may be cancelled. Similarly, for the normal taxpayer also, because it could be QRMP or the full-fledged taxpayer. So here it has been linked with the continuous tax period, which may be prescribed. Earlier, it was period of 6 months. So these, I would say, some cancellation aspect have been made. There were some unintended levy of tax on some of the sector, like in fish meal or in case of liquor license, where the license fee was paid to the government. So in those cases, it was provided earlier the tax was levied, maybe unintended,
later on it was clarified that there would not be any GST liability on these nature of income. But the problem was that from the period from 1st-7/2017, like for example in fish meal, from 1st-7/17 to 30th September 2019, where the unintended waste generated in the fish meal industry, there because of that omission, the tax was levied. Now here they have given a retrospective amendment from the 1st July 17 in the statute book to provide that if you have not paid the taxes during that period, you are not required to pay. But if a person has collected and tax already paid, then he would not be granted the refund. So these are some of the broad changes what we look at from the GST perspective. As we have a couple of minutes, I'll broadly touch upon the custom side, what all changes have taken place. So one important change in the customs was that if we recollect that in case of Canon India, Supreme Court had held that DRI is not a proper officer for the purpose of issuance of the show cause notice, and the demand was set aside. Thereafter, many High Court have followed the same decision of the Supreme Court. Now here department or a government have tried to undo that judgment of the court with retrospective effect to give power or to make the DRI officer also as the authorized officer for the issuance of the show cause notice. And once the DRI officer have been made the proper officer for issue of show cause notice, all the action taken by them in the past, where the liabilities have been set aside either by the Supreme Court or the various High Court, so all those have been nullified. So again, I would say a retrospective tax amendment regime. We could see one of the example of that where the government has lost in the Supreme Court. They have actually are trying to undo that decision and validate the action taken by the officers which were incompetent at that point of time for those particular action. Now they have also provided in the case of import valuation also, where it has been provided that government may or CBIC may specify that for certain specific class of imported goods, etc., there could be possibility of providing the arbitrary means, or I would say some specified means based on which valuation could be done. So the transaction value, what I would have declared on import of goods, that transaction value may be ignored and the various methodology could be introduced in the law based on which the value of my import would be determined for the purpose of levy of the basic custom duty and IGST and other related taxes. So this is again to nullify the Supreme Court judgment in case of Century Mills, wherein Supreme Court had held that valuation alert issued by Director General of Valuation based on monitoring of valuation trend of sensitive commodities cannot be used to reject the value unless valuation merit rejection based on the certain reasons in terms of section 14(1) or rule 2. So now there could be various means or indicator which could be used by department to reject the import value whatever is adopted by the importer. There are IGCR rule where import of goods at concessional rates are provision are there. In those cases, presently many of the compliances are in the offline mode. So here it has been provided that any importer who is importing the goods under the IGCR regulation, he need not do those compliances in the manual form. A dedicated portal would be made provided and all the compliance can be done through that portal. I would say one good measure taken by the government, where instead of doing the manual chakkar lagana to department, physically submitting the document, everything has been made to the online portal. One last part from the customs, if I look at, there have been various rates changes. So these rates changes, if you look at earlier, what used to happen that in the custom first schedule of the customs tariff act is there, wherein the rates are provided, then exemption notifications have been issued. Effectively, if one need to identify the rate of tax on particular product, he need to look at the tariff and the exemption notification also. And many times it becomes very cumbersome to identify the effective rate of tax in these cases. In fact, in the last year budget, government had provided that all exemption would have sunset clause of 2 years unless specifically
extended in that budget of the respective year. Now in this budget, they have done a mega exercise whereby some of the exemption entries where they want to continue it for the longer term or the concessional rate of entry, instead of keeping in the exemption notification, they have moved it to this customs tariff act, because of which the custom tariff rate mentioned in the customs tariff act rate would be the final rate. In some cases, exemption have been withdrawn. In some cases, the exemption are proposed to be partially or I would say phase-wise withdrawn. So basically, the objective of government seems to be more focus on the make in India or manufacturing in India, whereby if a person was importing the capital goods, where the many exemptions were there, all those exemptions are being withdrawn. If, let us say, India does not have manufacturing capacity for those capital goods as of now, so there what has been provided that instead of entirely taken away or abruptly taking away the exemption, it would be taken away in the phased manner. So like that, there have been many tinkering with the rates in the customs. But if one looks at holistically the changes made in the customs rate, those are first aimed at simplifying in arriving at the rate so that one need not look at various notification. And second, to be in line with the Make in India initiative, wherein the capital goods, finished goods capital, final capital goods import, those have been subjected to tax wherever the exemption was there. But if you are importing any parts or component required to manufacture those capital goods, so that in India, so in those situations, the rates of tax either have been reduced or exemption have been given, so that indigenous capacity can be developed for manufacturing of those capital goods in India. So these are, I would say, broad amendment what have been carried out in the indirect tax. Certainly, when we get into more practical nitty-gritties, associated challenges, more practical issues could always come out with relevant to this. Before I conclude this particular discussion on indirect tax, Madhukar sir is there. I would like him to comment for a couple of minutes on any of his observation on the specific amendment carried out in the budget. Ashish ji, we have 10 more minutes as Kapil ji is getting late due to other webinar. So I request we have 10 more minutes to elaborate on this topic. Over to you, Madhukar sir. Thanks, Sumit. That gives us some time. I think mainly we have covered everything, and maybe if Ashish wants, he can go back to the last slide of customs and do a few things which I thought I can add. You know that when the GST came, seamless credit was not a fancy word. It was real. And the courts also have ruled many times that ITC is a right. It is a right of a person itself. It is not some dole or some concession given by the government. वो हमको भीख नहीं दे रहे हैं, ये हमारा right है. But the way it has been, the law has developed and later started getting restricted. And today also you are seeing further, they are putting many things which are going to create more and more problems for the SSC. So I think this is something which is not acceptable at all. We have to remember, whenever we go for any litigation in GST from now on, this aspect as professionals, we have to push forward. What is that aspect? We have to tell each and every court that this is a value added tax. And therefore, the tax which is paid at the earlier point of time cannot be denied. It is a right. This has to be pushed. I have seen, unfortunately, in some of the decisions which have come, that advocates, that they have not taken this one point. What is the objective of GST? Pehle usko bolo. When you go to the court, tell them, sir, the objective of GST was this. Why are you missing out such an important point? I do not know how the some of the Supreme Court lawyers are missing something which is obvious. Have they decided that this argument will not work with the
Supreme Court. So I think we should not assume such things. We should go ahead and do this. And I think Kapilji has joined. If you want, you can ask the people for any, one or two questions. Ashish and me can do it. If he has not joined, then Ashish can take that last slide, Sumiji. Ashish, you can take last slide, as question answer will take more time and it will not be beneficial for all. So if you have anything to add on, you can, Ashish, please. Yes, so I would say from the customs perspective, what I had mentioned broadly, I had put upon, I am not getting into the rate-wise changes of the various customs product, but certainly I would like to touch upon few important aspects, what we are seeing around in GST on daily basis from the department side, which how these things are going to pan out in future with these revised provision. So if you look at how this entire functioning of the of revenue department is taking place, that GSTN is there and GSTN has developed, like Madhukar sir mentioned, that they have database, artificial intelligence based database, based on which system generated discrepancies are identified. And those system generated discrepancies ke basis pe mass notices are being sent. Now, after this amended provision, where the more onerous responsibility has been casted on the taxpayer. So earlier, as a taxpayer, I could have taken various ground to claim कि जो आपकी report या data analytics से जो चीजें आप demand raise कर रहे हैं, उसके पीछे statutory backup नहीं है. But the way this entire new input tax credit mechanism has been provided for the matching or ensuring the compliance of the supplier, and so those grounds are going to be little difficult. So here I would say each one of us now need to look at if there is need of again re-looking at the vendor composition, looking at the I would say getting or changing the contract with the vendors to provide suitable indemnity aspect if non-compliance by the vendor, to have more real-time streamlined reconciliation system within the organization. And I would say it is not only the within GST department, it is interdepartmental aspect also, where recently in one of the income tax assessment of a client, where the faceless assessment department was, income tax department was comparing the turnover reported in 3B with the turnover reported in the income tax, and it was so difficult to explain in the faceless, where there could be certain difficulties in the 3B or some incorrect reported in 3B, but finally, even if 99C and all those things are submitted to the income tax officer, they were not able to understand 99C. So actually this interdepartmental data sharing and where the interdepartmental comparisons are taking place, we need to keep in mind that entire 360-degree reconciliation from all the perspectives. I think Kapil Goel sir is with us. So I would not like to venture into his time where we are going to listen very important changes what have taken place in the no problem, Ashish bhai, no problem. The only difficulty is after this also I have to catch other seminar, and last 4-5 hours I am speaking, and before that there was a lot of hectic day in the court. I argued 1 hour in the morning also in the High Court. I'm already done, sir. My most of the part was already done, so we can proceed. I hand over to आप Sumit अभी sir 5 to मिनट take बाद भी करेंगे ना, तो मैं चाय पी रहा हूँ, तो मैं 5 मिनट तक कोई दिक्कत नहीं है. I'm sorry, rather it will be as dear as it is, sir. So when in fact this like what I was talking about, so there is one separate BIFA, one software what has been developed by the GSTN, so which is giving report to all the state department. Yesterday, in fact, there was a circular what had come from the Maharashtra SGST department, wherein they had laid down detailed guidelines for the assessment based on the written scrutiny also. So if one go through that circular of the Maharashtra department, sooner or later those things are going to be implemented across different states. So wherein the way this scrutiny is being done is to take the data from that BIFA software, and from that BIFA software an annexure is given to the taxpayer and entire onus is put on the taxpayer to justify his claim.
So how long it is going to be there, and more importantly, whenever anything's come in GST where, let us say, they hold that it is not your credit or it is bogus transaction or whatever this thing. Anyway, Kapil sir is there. There could be consequent impact under the income tax also, where the either expenses, disallowances, and all those things. जब आप आजकल तो 360 डिग्री प्रोफाइल होने लग गया भाई साहब, थोड़े दिनों की बात है, सब कुछ ऑलरेडी इनकम टैक्स एक्ट में 271 AED का पेनल्टी आ चुका है लास्ट ईयर। वो आपका जीएसटी वाला जो प्रॉब्लम था बोगस बिलिंग का, बोगस बिलिंग तो पीछे रह गया, इनकम टैक्स एक्ट में नया पेनल्टी डाल दिया उनको, बेस मिल गया फॉल्स एंट्री और ओमिटेड एंट्री। यू नो, थिंग्स स्टार्ट समवेयर एंड दे लैंड समवेयर। Correct. So for the professional, it becomes very important that compliances are not taken lightly. For the industry also, compliance cost तो लगता है, but non-compliance का cost और भी ज़्यादा है. Litigation that aspect has to be taken in mind. And anyway, Kapil sir is there with us, where he is regularly appearing before High Court and other tribunal or the forum. The way, sorry to say, courts के judgment at least GST में आ रहे हैं, those appear to be little more appear to be favored towards the government. So अगर कोई aggressive call लेता भी है, तो aggressive call का final outcome जो है, it may not be that easy. And wherever favorable judgment are coming, we have already seen in today's customs discussion that two or three favorable judgment of Supreme Court has been done away with by making the retrospective amendment and by validating वो कैनन वाला तो नहीं बोल रहे आशीष भाई? कैनन वाला, yes, जस्टिस बोबड़े का ऑर्डर था। Yes, that has been done away with. वो उड़ गया। Yes. उड़ गया। So that has been done away. वहाँ पे DRI ऑफिसर को प्रॉपर ऑफिसर का दर्जा दे दिया और पुराने सारे उनके एक्शन जो है वो सब वैलिडेट कर दिए। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स आए हैं, जो ओपन मैटर्स पड़े हैं, अगेन एक another round of litigation start होएगा। Very painful, very disappointing. We have to be very careful in compliance because the cost of non-compliance is significant and sometimes may endanger closing the देखो ना business आशीष भाई, जो आपने बात बोली, कितना ज्यादा लिटिगेशन का उसका टाइम, समय सबका वेस्ट भी हो गया, कॉस्ट भी लग गई और उसको हासिल तो कुछ नहीं हुआ। Yes. Back to square one. Yes. So with this, I conclude deliberation on indirect tax. Thank you, Sumit ji, for giving opportunity. In fact, Madhukar sir was to take the session, but he is in some remote place on budget day. Some of the family member expired, so then he said me if I could take some part of it. So sorry, dear. Yeah. Okay, all the best, Ashish bhai. Thank you. Thank you, and thank you, Ashish ji, and in absentia Madhukar sir, who has taken initial 35 minutes. And thank you, Ashish ji, for taking wonderful session on indirect tax. And once again, welcome to Kapil Goel ji as dynamic speaker in. अब आप फॉर्मेलिटी सोलो सतीश भाई, मुझे समित भाई चालू करने दो, क्योंकि 7:30 सॉरी सर। I hope my voice is clearly आ रही है ना sir for direct tax discussion sir? मेरी voice clearly आ रही है ना सर? Yes sir, clear है, एकदम clear है। Thank you करण भाई। समित भाई, देखिए क्या है कि that last day when I started discussing this budget in our seminar of Rajesh ji, I started getting a feeling that what we saw the trailer in the budget speech, the film is not like that. Film has the contents which are far more impactful than the what was conveyed in the budget speech, because when we listened, all of us listened to the budget speech, we thought in the direct taxes there are no worrying changes, or there are no changes which are concerning the taxpayer. But when you read the finance bill, brother, it gives us a very interesting reading. It's such a lengthy book, verbose book now of finance bill. Around 80 amendments are there, brother. 80 amendments, clauses are there in finance bill 2022. And if I say, Sumit bhai, as I'm learning from my past seminars, I include that in my accumulate that experience of last day and today's morning seminars in this seminar. Then I can say you, sir, that most of the amendments are various amendments which have been made in this finance bill, Sumit bhai, disappointingly are for the amendments are in somewhere changing the areas where last year only the amendments were made. But as you have been must be having this seminar, Karan ji, aap logo ke yahan on this charitable trust. The charitable trust was changed drastically last year, but there are some far more extensive changes this year, Sumit bhai. And as Ashish bhai was telling that
lot of amendments. There are also some amendments done, Sumitji, where the judgments of the courts in the favor of the taxpayer are overruled, and that too with retrospective effect. I recall those happy words of, in the memory sense, of late Jaitley Saab when he presented the first budget. He's smiling rightly. I don't know where these promises goes. Are they only really jublas, or they are more than that? Sorry to say like that. That they say, this government will not bring any amendment which is retrospective because it is some kind of tax terrorism. Now, I don't know, Sumit Bhai, in which direction we are heading towards. Are these amendments which are becoming an order of the day where court rulings favoring the taxpayer are handpicked and they are fulminated and immolated and lancinated like anything? As if the entire battle, Ashishji, which has gone in the courtrooms and which the jurisprudence has evolved so beautifully, it is of no value to the other side. Rather, one should take it in this sense that we are going towards a sense of a no hope litigation sometime. When you have such changes, it shows me, I am constrained to use this phrase, sharp phrase or harsh phrase, that it is then it gives that we are in a sense of a no hope litigation. Or some matter where we will win also, as you rightly put, Ashish Bhai, कि अभी मुझे भी ऐसा लगने लग गया कि पिछले साल से और इस बजट से इनकम टैक्स की प्रपोजल से कि that they are all locating. सर मेरा कैमरा तो ओपन है. Yes, your camera is open. मैं अदर पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इफ यू कैन. अच्छा नहीं कोई बात नहीं सुन भाई. मेरे को लगा मेरा कैमरा ओपन नहीं है. मेरा कैमरा ओपन नहीं होगा तो मैं तो नजर आ रहा हूँ यहाँ पर सामने. सॉरी. सो आई वाज सेइंग, जो आशीष भाई बोल रहे थे, मुझे पता नहीं था कस्टम्स एक्ट में भी इन्होंने ऐसे चेंजेस कर दिए. बट नाउ आई फील मोर पेन्ड और डिसअपॉइंटेड that when I see as an academician, Ashish ji, the changes which are made just to overcome the litigation which favors the taxpayer is not a healthy trend, or rather it is not a predictable tax regime, which they say, Honorable FM rightly says in the opening of the budget speech when she quoted Mahabharata shloka, and she says that we have to have a stable and predictable tax regime with trusting the taxpayers. I don't know when these proposals are made, that slogan or that hyperbole or that kind of sermon has worked here or not. Sorry. If I contrast, just suppose, the sermons and homilies given or the statements passed in the budget speech while opening Mahabharata shloka, and when I come to the finance bill proposals, I am disappointed here. That is not predictable tax regime. That is not a stable tax regime. And at least that is not a tax regime which trusts the taxpayer. This is as simple as to me. It's my humble observation on the prefatory remarks. Now, Sumit Bhai, to take that point forward, which Ashish said and which I just said, is that I just want to take 4 amendments in the beginning itself of the business head of income. They are as critical as Ashish will also appreciate if Ashish can correlate my point to the subject also. So there are 4 important amendments are in the business head of taxation, or for the people who are having some business income. I see they are broadly impacting the taxpayer who are in the business sector. Now there are 4 important amendments, Sumit Bhai. In one of the amendment where they have come on the SESI is in relation to the treatment of the education cess and health cess. What has happened? There has been a judgment of Bombay High Court and Honorable Rajasthan High Court. Bombay High Court judgment was in case of CISA Goa Limited. Rajasthan High Court judgment was in case of Chambal Fertilizers Limited. Now this judgment has come, Sumit ji, 5-6 साल पहले का ये judgments है. इनका बेसिस पे कोर्ट्स ने, हाई कोर्ट ने बोला दोनों ने कि साहब नहीं, जो एजुकेशन सेस होता है और हेल्थ सेस होता है उसको इनकम टैक्स में बिजनेस एक्सपेंडिचर क्लेम किया जा सकता है, एंड इट इज नॉट akin to surcharge or tax. That was the ruling of the Honorable Bombay High Court, Goa bench, and that was the ruling of Chambal Fertilizer, Rajasthan High Court. Now, a judgment came from Kolkata ITAT in Kanoria Chemicals case in 26 October 2021 date order by tribunal bench order, which tribunal bench, Ashish Bhai, very peculiarly it happens, the tribunal says these 2 high courts are not correct. Rather, they have not correctly decided the law issue, and the tribunal deviates from the jurisprudence explained by the Honorable Lordships of Bombay High Court and Rajasthan High Court. Kolkata tribunal charted its own course, applied a judgment of the Honorable Supreme Court of India in the case of K. Srinivasan 83 ITR, saying that ki education cess ka kharcha nahi milega. It is equal to surcharge. It is equal to tax. It is equal to tax. So Calcutta ITAT virtually deviated from the Bombay High Court and Rajasthan High Court order. This is all written in the memorandum of finance bill. I am not speaking from my side. Now, what happens is, now Sumit Bhai, they say कि वो
लेजिस्लेचर ने क्या लिखा, जो लॉ मेकिंग बॉडी है लेजिस्लेटिव बॉडी ने, वो कहता है कि साहब नहीं, राजस्थान हाई कोर्ट का डिसीजन और सुप्रीम कोर्ट का, सॉरी बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन तो हमारे को इसलिए सही नहीं लगता क्योंकि कोलकाता आईटीटी ने सही समझाया है सुप्रीम कोर्ट को बताकर। तो भैया आपके पास सुप्रीम कोर्ट नहीं है उसके लिए, क्या आप सुप्रीम कोर्ट का काम कर रही है क्या अभी? सॉरी, अभी सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान हाई कोर्ट के डिसीजन में आशीष भाई एसएलपी फाइल्ड है चंबल फर्टिलाइजर में, टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, बट आई हैव सीन। और बॉम्बे हाई कोर्ट में भी होगी अगर चेक किया जाएगा, मेरा ऑफिस चेक कर रहा था, उसने कहा कि राजस्थान हाई कोर्ट का तो है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है अदरवाइज कि नहीं साहब, 3 ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, तीनों का पावर सेपरेट है। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जिस तरीके से वो मेमोरेंडम में उन्होंने लिखा है, ठीक है, वो आप कह सकते हैं somebody can have a perspective आशीष जी की it's a honest saying, but see the kind of distasteful manner in which you are saying the things कि नहीं साहब, बॉम्बे हाई कोर्ट एंड राजस्थान हाई कोर्ट जजमेंट्स आर पर इंक्यूरियम, you know there is a word in the per incurium, ये मेमोरेंडम में लिखा है, इस मेमोरेंडम में फाइनेंस बिल की पर इंक्यूरियम। मैंने आज तक किसी मेमोरेंडम में पर इंक्यूरियम ऑर्डर कहते नहीं देखा लेजिस्लेचर को, क्योंकि ये सॉर्ट ऑफ ए इंटरफेरेंस इन द प्रोसेस ऑफ जस्टिस है। आप क्यों ना भैया पर इंक्यूरियम कहने वाले, मैं तो फिर मैं भी कह दूंगा हर एक केस को पर इंक्यूरियम जो मेरे खिलाफ है, आप मुझे रोक लेंगे क्या? सॉरी, फिर तो हर एक आदमी जो हार जाएगा आशीष जी, वो तो कहेगा ये गलत जजमेंट है भाई साहब, उसको कभी कबूल थोड़ी ना होगा है। तो अब मुद्दे की बात यह है कि उन्होंने एक्सप्लेनेशन डाल दी है। मैंने एक बात कह रहा था लाइटर साइड पे आशीष जी कि एक्सप्लेनेशन का मौसम चल रहा है, जैसे मौसम होता है ना, मौसम में कोई चीज होती है, तो इस मौसम में एक्सप्लेनेशन बहुत आ रहे हैं हमारे इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर। मैं हमारा इसलिए बोलता हूँ कि मैं इनकम टैक्स एक्ट की समझ पा रहा हूँ, तो एक्सप्लेनेशन पे एक्सप्लेनेशन पे एक्सप्लेनेशन, मतलब ऐसा भी हो रहा है कि एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेनेशन आ रही है। ये विचित्र स्थिति, ये मैं इस फाइनेंस बिल में देख रहा हूं कि एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए धारा 37 के अंदर एक्सप्लेनेशन डाली गई है। आपको ये अचरज नहीं लग रहा क्या? तो बिजनेसमैन कितना एक्सप्लेन करेगा अपने आप को, और हम कितना एक्सप्लेन करेंगे, और हम सब कितना एक्सप्लेन कर पाएंगे रेगुलेटर को और एडमिनिस्ट्रेशन को। एनी हाउ सेक्शन 40 की अमेंडमेंट है सुमित भाई, पहली सेक्शन 40 में इन्होंने एक्सप्लेनेशन 3 डाला है। और ये देखिए आशीष भाई, ये अमेंडमेंट हमारे यहाँ 1/4/2005 से हो गया, 1/4/2005। आपकी स्माइल बहुत बढ़िया कह रही है सर, मेरी बात को कन्वे कर रही है। मतलब कितने साल पीछे चले गए? 17 साल पीछे। 1/4/2005 तिथि रखी गई है, जिससे ये सेक्शन 40 की जो नई एक्सप्लेनेशन है, जिसका नामांकन है 3, एक्सप्लेनेशन नंबर 3 14/2005, that any cess cannot be claimed as expenditure, it is equal to tax। फिर वो बात आ गई ना, आप रेट्रोस्पेक्टिव मौसम चल चुका है सर, और वो रेट्रोस्पेक्टिव आशीष भाई प्लीज ऐड, यू वांट टू से समथिंग। कपिल भाई एक पॉइंट पूछता हूं मैं यहाँ पे सर कि हमारे जीएसटी में जो ट्रांजिशन के टाइम पे उन्होंने सेस का रिफंड नहीं दिया और उसको बोला कि हम आपको नहीं देंगे, तो एज ए बिजनेस मेरे को रिफंड नहीं दिया तो मैं उसको राइट ऑफ करूंगा P&L में, तो ये उस सेस को भी डिसअलाउ कर रहे हैं कि इनकम टैक्स के सेस के बारे में बात कर रहे हैं? भैया एक सेकंड रुको, ये आपका विद्वान आदमी का क्वेश्चन है, मुझे देखना पड़ेगा। Sorry, for the removal of doubts, it is hereby clarified that for the purpose of this subclause, the term tax shall include and shall be deemed to have always included any surcharge or cess by whatever name called on such tax। देखिए हमारे यहाँ टैक्स की एक परिभाषा है ब्रदर, सेक्शन 2 में डिक्शनरी क्लॉज में आशीष भाई आप देखेंगे, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में वो इनकम टैक्स के ऊपर सेस की बात कर रहा है। अगर आप इसको कोरिलेट करेंगे डिक्शनरी क्लॉज इनकम टैक्स एक्ट से, योर क्वेश्चन इज एज लर्नेड एज इट इज। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव पोज्ड मी दिस क्वेश्चन, अदर दिस इज समथिंग न्यू टू मी। अब मैं अगले सेमिनार में बोलूंगा तो कहीं मुझे बोलना होगा तो मैं ये भी लगा दूंगा उसके साथ, ये आशीष भाई ने मुझे ये बोला था। चलिए, थैंक यू आशीष भाई। Well, my answer is this humble answer. Maybe you can check it. The definition of the tax in the income tax law is not as wide. It is talking about tax on income of the income tax law under Finance Act. Maybe that टैक्स विच यू आर, जिस पे आपने सेस की बात कर रहे हैं, वो इनकम टैक्स एक्ट का तो टैक्स, फाइनेंस एक्ट का तो टैक्स नहीं है, वो तो अलग टैक्स हो गया। यस। तो अगला अमेंडमेंट ब्रदर इसमें इनकम टैक्स एक्ट के बिजनेस हेड के अंदर पीजीबीपी में जो है, क्योंकि पीजीबीपी बहुत लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है इसलिए मैंने उसी से चालू किया है। अभी उसका दूसरा पार्ट में ले रहा हूं ब्रदर, दैट इज सेक्शन 37। सेक्शन 37 क्या है? देखिए सेक्शन 37 हमारे यहाँ बहुत पुराना सेक्शन है आशीष भाई, हम जब लोग सीए करते थे तब से पढ़ते आते हैं कि जहां पर भी बिजनेस खर्चा सेक्शन 30 से सेक्शन 36 में नहीं मिल सकता, वो सेक्शन 37 में मिल जाएगा। अगर वो अदरवाइज एडमिसिबल है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ओनली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द बिजनेस पर्पज है, अक्रूड है, ब्ला ब्ला ब्ला। आई विल जस्ट रिकॉल माय व्यूअर्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एक्सप्लेनेशन 1 आया था सेक्शन 37 में सुमित भाई, जहां उन्होंने ये लिखा था कि वो, अच्छा वो आया था पहले के गवर्नमेंट्स में, और उन्होंने ये लिखा था आशीष भाई याद है हमें, क्योंकि मैंने ये सीए के, जब हम सीए कर रहे थे ना तब ये रट्टा मरवाते थे हमारे सर गुरुजी कि साहब ये अमेंडमेंट एक्सप्लेनेशन 1 इसलिए आया था 37 में कि कुछ जजमेंट्स हाई कोर्ट्स के आगे थे, कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने टेररिस्ट वगैरह को भी जो एक्सटॉर्शन मनीज दिया गया था वो भी टाटा वगैरह के कुछ केसेस में अलाउ कर दिया था खर्चा।
तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने बोला था एक्सप्लेनेशन 1 में कि इफ यू आर इनकरिंग एनी एक्सपेंडिचर फॉर द पर्पस व्हिच इज एन ऑफेंस और फॉर द पर्पस व्हिच इज प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ, then that expenditure will not be deemed to be incurred for the purpose of business. That is the language of explanation 1 to section 37. We had of lately 2014 में एक explanation 2 आया था जिसमें CSR वाले खर्चे का उन्होंने बोलने का बात किया था, explanation 2 to section 37. Now this is explanation 3. You will vouch me, I did not said like that कि भैया ये explanation का मौसम है. Now वो भी 40 वाला डिस्कस करके आए हैं, वो भी explanation नंबर 3 था. ये सेक्शन 37 में कोइंसिडेंस है, ये भी एक्सप्लेनेशन नंबर 3 है. यहां क्या कह रहे हैं अब सर, यहां ये कह रहे हैं सर कि दैट जो ऊपर एक्सप्लेनेशन 1 में लिखा हुआ है कि खर्चा जो आप इलीगल पर्पस के लिए कर रहे हैं, प्रोहिबिटेड पर्पस के लिए, वो कौन सा पर्पस होगा इंक्लूसिवली, वो एक्सप्लेनेशन 3 बता रही है. मतलब एक्सप्लेनेशन 3 इज एक्सप्लेनिंग द कंटेंट ऑफ एक्सप्लेनेशन नंबर 1 इन सेक्शन 37 that what shall be included in the expenditure incurred for the purpose which is prohibited by the law and which is offense. Now there are 3 variants. I use the term Ashish bhai on lighter side variants. There are 3 variants in this explanation 3. What are the 3 variants? One variant is कि अगर बिजनेसमैन ने जो बिजनेस इनकम के अगेंस्ट कोई ऐसा खर्चा क्लेम किया है जो अपने हिंदुस्तान के किसी कानून के वायलेशन में है या हिंदुस्तान के बाहर किसी कानून के वायलेशन में है, जैसे बाहर भी कोई खर्चा क्लेम किया है, जैसे आपको पता है रेजिडेंट की इनकम वर्ल्ड वाइड टैक्सेबल होती है, और उसमें मैंने कोई बाहर खर्चा किया है, मेरी बाहर भी ब्रांचेज हैं, तो वो खर्चा भी आपको अलाउ नहीं होगा बाहर वाला, अगर वो बाहर के किसी फॉरेन लॉ को, कंट्री के लॉ को वायलेट करता है. तो उन्होंने ये लिख दिया एक्सप्लेनेशन 3 के पहले लिम में कि इफ एन एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड व्हिच अदरवाइज वायलेट्स द लॉ ऑफ द फॉरेन कंट्री आल्सो इट शैल आल्सो बी नॉट एडमिसिबल. इन इंडिया वाला तो पहले ही था, आउटसाइड इंडिया वाला भी आ गया. दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बोला है कि अगर कोई व्यक्ति को कोई बिजनेसमैन ऐसा बेनिफिट देता है तो जो व्यक्ति बेनिफिट ले रहा है उसका कंडक्ट उसको अलाउ नहीं करता. अब कंडक्ट अलाउ का मतलब ये है कि इफ एनीथिंग इज देयर जो उसके कंडक्ट को रेगुलेट करता है, इफ लेट अस से हमारे सीए का एथिकल कंडक्ट है, डॉक्टर्स का भी है, इंजीनियर्स का भी, वेरियस प्रोफेशनल बॉडीज हैव रिकमेंडेड द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और बाइंडिंग कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द प्रोफेशनल्स, जो भी रेगुलेटिंग बॉडीज होती है. तो उन्होंने इसको लैंग्वेज को बहुत वाइड रखा है सेकंड लिम में कि एनी बेनिफिट गिवन टू एनी पर्सन which his conduct does not permit him as stated in the relevant regulation and rule etc. So the background of this change is like this, there was a old circular of the CBD, I am saying old because it is 2012, CBD circular number 5/2012 was there, which said that in case of pharmaceutical companies, if they are giving freebies etc. to the doctors, then pharmaceutical companies will not be given that expenditure. Now, after that circular 5, Ashish ji, lot of litigation crop up in the case of pharma companies. Now we are in 2022. This 2012 वाला जो circular था, उसको उन्होंने एक formally law में enact कर दिया, erect कर दिया है. What they say, rather वो pharma company का नहीं बोल रहे doctors. इसमें उन्होंने person जो लिखा है जिसको benefit जा रहा है, जो disallow होगा, वो कोई भी person हो सकता है. It is not even doctor. It can be engineer also. It can be lawyer also. It can be any other professional. Provided there is some regulation, notification, etc., which prohibit the conduct of that person to accept that benefit, तो वो भी inadmissible हो जाएगा. That is part 2, मतलब limb 2 of this explanation 3 to section 37. और तीसरा पार्ट ये है सर कि कोई भी कंपाउंडिंग फीस आप पे करेंगे. अब देखिए ये बात ट्रिकी चेंज है सर. आशीष भाई देखिए कहाँ घुमाया है. वो कह रहे हैं ये नया एंट्री है, ये बिल्कुल कहीं कंटेम्पलेशन में नहीं था, बल्कि मेमोरेंडम में मैं ढूंढता रह गया, मुझे इसके ऊपर कुछ नहीं मिला. वो कह रहे हैं अगर बिजनेसमैन कोई भी लॉ में किसी भी ऑफेंस को कंपाउंड कराने के लिए पैसा देता है, चाहे वो हिंदुस्तान के लॉ में कंपाउंड कराने के लिए ऑफेंस का पैसा दे रहा है या हिंदुस्तान के बाहर वाले कानून में दे रहा है, तो वो कंपाउंडिंग फीस अलाउड नहीं होगी. तो सिंघानिया जी बहुत लोगों ने हमसे पूछा कि अभी सवेरे से कि गोयल साहब कल से हम जब डिस्कस कर रहे हैं कि भैया ये कौन कौन सा कंपाउंडिंग फीस है. भाई साहब कोई भी कंपाउंडिंग फीस है, जहां किसी भी ऑफेंस को किसी भी लॉ में आपने कंडोन कराने के लिए कोई कंपाउंडिंग दिया है तो इट विल बी इनएडमिसिबल एज खर्चा. और ये इन इंडियन लॉ एंड इन फॉरेन लॉ. अब आशीष भाई पता नहीं आपके जीएसटी लॉ में भी कंपाउंडिंग होती होगी. ये कंपाउंडिंग जो रिडम्पशन फाइन कॉन्फिस्केशन वगैरह होता है, वहां पे रिडम्पशन फाइन या वो सब कंपाउंडिंग फीस का नेचर है. जब एक लॉ मेरे को प्रोवाइड करता है कि आप कंपाउंडिंग फी पेमेंट करके अपने ऑफेंस को रिड्यूस कर सकते हो या चीजों को, लिटिगेशन को जो भी खत्म कर सकते हो, तो विद इन द लॉ अगर मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे उसको डिसअलाउंसेस का रीजन कुछ समझ नहीं आ रहा. आपका मेरा भाई दोनों का केमिस्ट्री बिल्कुल एक हृदय मैच कर रहा है. बिल्कुल आपने मेरा मन का बात बोला है
बिल्कुल आपने सीखा कि मिस्टर गोयल, और आपने बहुत अच्छी बात बोली कि मिस्टर गोयल, अगर किसी बिजनेसमैन का एक बोनाफाइड सेंस है उस लिटिगेशन में ना जाना, जैसे सेबी में कंसेंट फीस पे करते हैं, आप म्यूनिसिपैलिटीज को भी कंपाउंडिंग फीस दे सकते हैं, और भी अथॉरिटीज हो सकती हैं जहां आपने कोई बोनाफाइड ब्रीच कर दिया सर, और उसको कंडोन कराने के लिए आप लिटिगेशन को, जैसे कहते हैं ना, टू पुट क्वाइटस टू द मैटर, you pay compounding fees, then it does not believe that it is a prohibited expenditure, because compounding fees has its own taint of, मतलब it's like a peaceful thing कि आप peace चाहते हैं, you want to concentrate your energies on the business, you don't want to litigate in the courtrooms, but anyhow this is the change which they have did. Change is change, sir. They are law, though they I believe are more now. आशीष भाई, अब ये समय आ गया कि वो कहते हैं हम कोई भी लॉ बना सकते हैं, मुझे लगता है कि वो कहते हैं हम, सॉरी, दो पॉइंट है, हालांकि मैं इनकम टैक्स तो नहीं करता, इससे रिलेटेड जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, जब मैं कंपाउंडिंग फीस की बात करता हूँ, ये जो लेके आ रहे हैं, इसका मतलब तो हर कंपाउंडिंग फीस एक मेलाफाइड इंटेंट था पहले एसएससी का, उस मेलाफाइड इंटेंट को ओवरकम करने के लिए उसने कंपाउंडिंग फीस पेमेंट किया, एंड बिकॉज बाय डिफॉल्ट उसका इंटेंट मेलाफाइड मान लिया तो उसको यहाँ पे डिसअलाउ कर दिया। आई थिंक कुछ ऐसा माइंडसेट लग रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपने बिल्कुल सही रीड किया है। क्यों? क्योंकि वो जो ऊपर लैंग्वेज एक्सप्लेनेशन 3 की है ना, मैं आपको दोबारा बोलता हूँ, वो यही है कि दैट इट शैल बी डीम्ड टू हैव इंक्लूडेड ऑलवेज दिस, और ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हमेशा से नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उससे नजर तो नहीं आ रहा, उसमें तो इन्होंने प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट साल लिखा है, पर वो जो मेमोरेंडम, अब देखिए क्या है हमारे यहाँ, पता नहीं आपके यहाँ पर भी ऐसा है नहीं, इस बार हमारे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इस बार बहुत सारा अमेंडमेंट ऐसा है जो वो कह तो रहे हैं कि हम कोर्ट का रूलिंग को ओवररूल करने के लिए ला रहे हैं, या हमारा शुरू से लेजिस्लेटिव इंटेंट ये था, बट उसको डेट प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे रहे हैं। अब जब कोर्ट में जाएगा तो झगड़ा तो क्रिएट हो गया ना, स्यापा तो पड़ गया ना भाई साहब, सॉरी स्यापा बोल रहा हूँ पंजाबी लैंग्वेज में, कि भाई साहब ये कोर्ट तो ये कहेगी साहब इंटेंट अगर इनका ये था तो ये तो रेट्रोस्पेक्टिव है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर अगेंस्ट भी हमारे। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। फिर ये लिटिगेशन का मुद्दा हो गया ना, इट्स अ लिटिगेटिव इशू देन। अगर डिपार्टमेंट मेरे पे एडिशन कर देता है पुराने सालों में, या अपीलेट अथॉरिटी आईटीटी वगैरह मेरे को ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट को मेरे पेंडिंग केस में लगा देते हैं, इसको रेट्रोस्पेक्टिव मानकर, तो मेरे लिए तो एक अलग वो क्रिएट हो गया ना लिटिगेशन का बैटलफील्ड। यू हैव राइटली आस्क्ड दिस क्वेश्चन, देयर इज ए कैच। रादर हमें तो ये समझ में आता है कि एक्सप्लेनेशन, जब हम पहले पढ़ते थे कि एक्सप्लेनेशन का मतलब कानून को समझाना होता है जो ऊपर लिखा है, अब तो भाई साहब एक्सप्लेनेशन सब्सटैंटिव प्रोविजन बनने लग गया ना। सी कहते हैं ना, उसका जो एक्सप्लेनेशन का जो तत्व होता था, पहले एक्सप्लेनेशन होती थी कि लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए जो ऊपर मेन प्रोविजन में लिखा है, अब एक्सप्लेनेशन कविता जी ऐसी होने लग गई कि नहीं, एक्सप्लेनेशन में ही कानून बन रहा है। आप समझ रहे हैं, जैसे मैंने सेक्शन 40 वाला एक्सप्लेनेशन 3 बताया, सेक्शन 37 वाला एक्सप्लेनेशन 3 बताया, अब अगले एक्सप्लेनेशन पे आ जाइए, 43B के एक्सप्लेनेशन पे। तीसरा पॉइंट, there was a ruling of the Supreme Court of India, sir, in the case of MM Aqua Limited, 436 ITR 582. You can note down this case law, sir, 436 ITR 582. आशीष भाई, ये सुप्रीम कोर्ट का हमारे यहाँ जस्टिस नारीमन का ऑर्डर था, जैसे आपके यहाँ कैनन को उन्होंने किया, हमारे यहाँ MM Aqua को ले लिया। MM Aqua was the decision of the Supreme Court which just came in the last 1 year. It was a Supreme Court order by Justice Nariman bench. In this case, the issue was this, in 436 ITR, page 582. The issue was this under 43B. This judgment concerns section 43B, जिसमें हमारे इनकम टैक्स एक्ट में खर्चा आपको पेमेंट बेस पे मिलता है, even though you are following mercantile system. तो उसमें ये भी लिखा है कि अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आपको ब्याज देना है तो पेमेंट बेस पे मिलेगा। तो क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आपने वो ब्याज देने की बजाय प्रत्यक्ष रूप से उसके साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट कर लिया कि उसको बदले में ब्याज के डिबेंचर या कोई और इंस्ट्रूमेंट इशू कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जिस व्यक्ति ने रिहेबिलिटेशन प्लान एंटर किया एमएम एक्वा ने, और उसने ब्याज के बदले में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अपने डिबेंचर इशू कर दिए, तो इट इज अ डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी, एंड 43B, द क्लेम ऑफ द सेसी अंडर 43B इज मेंटेनेबल, अलाउएबल। नाउ दे से दिस, ऑल्दो दे हैव नॉट रेफर्ड इन द मेमोरेंडम एज सच दिस जजमेंट, बट दे से कि कुछ कोर्ट रूलिंग आए हैं जिन्होंने ऐसा होल्ड कर दिया है, तो हम उसको ओवररूल करना चाहते हैं, क्योंकि वो लेजिस्लेटिव इंटेंट के, अभी देखिए ये मैं अभी बहुत जगह आशीष भाई बोल चुका हूँ, लेजिस्लेटिव इंटेंट हमें तो पता नहीं चलता कैसे क्वांटिफाई होती है, कैसे असेस होती है, और कहाँ पाई जाती है, और इसका डोमिसाइल क्या है। सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट। तो क्या हुआ साहब, वो कहते हैं लेजिस्लेटिव इंटेंट के खिलाफ है, तो भैया अब इन्होंने एक्सप्लेनेशन 3B, 3C, 3D 3 जगह चेंज किया 43B में, और उसमें लिख दिया कि अगर आप ब्याज की लायबिलिटी के बदले में, किसी लायबिलिटी के बदले में कोई डिबेंचर इशू कर रहे हैं या कोई और इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहे हैं, तो उसको डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी नहीं माना जाएगा, और 43B में आपका क्लेम आपको नहीं मिलेगा जब तक वो असलियत में अदरवाइज मॉनिटरी फॉर्म में पे ना हो जाए। आई होप यू गेट दिस चेंज। ऑल्दो फिर इन्होंने इसको प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कहा है, बट जो मेमोरेंडम है उससे लगता है कि वो पुरानी जो इंटरप्रिटेशन है कोर्ट्स की, उनको ओवररूल करना चाहते हैं। जो उन्होंने क्लियरली लिखा है कि जो इंटरप्रिटेशंस कोर्ट ने दिए, दे आर अगेंस्ट लेजिस्लेटिव इंटेंट। आई एम वेरी कॉन्शियसली सेइंग दिस। सो दिस
this what you say quandary of and conundrum of retrospective versus prospective will always be alive. ये चाहते हैं आशीष भाई हमारे जैसे वकील जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की प्रैक्टिस करते हैं ना, उनके पास काम रहे हमेशा, और हमारे को भगवान लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे, और हमारे पास लोग आते रहे कविता जी और हमें कुछ ना कुछ देते रहे। तो एक सेक्शन 40, सेक्शन 37, सेक्शन 43B, चौथा चेंज बिजनेस हेड से संबंध आशीष भाई, ये भी बहुत रिग्रेसिव चेंज लगा। 14A 14A क्या है, ये ऑलवेज लिटिगेशन का मुद्दा रहा है, हमारे को इतने केस मिले आईटीटी में, हाईकोर्ट में लड़ने के लिए, मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब 14A हैज बीन ए प्रोविजन व्हिच हैज बीन द बेडरॉक ऑफ वेरियस लिटिगेशन। तो एक इशू ये था सर कोर्ट्स के सामने जो पहले आया कई बार कि क्या टैक्स फ्री इनकम बिना अर्न किए एक निर्धारण वर्ष में क्या सेक्शन 14A का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बहुत सारा हाई कोर्ट्स ने ब्रदर कंट्री में ये बोल दिया कि साहब नहीं किया जा सकता, सेक्शन 14A लगाना है तो उस साल में, जिस साल में आप सेक्शन 14A लगा रहे हैं, उस साल में इनकम होना जरूरी है, टैक्स फ्री इनकम। अब हमारा सीबीडीटी अपना सीबीडीटी ही है, कई बार तो उनकी दया हो जाती है। अभी सर्कुलर इन्होंने इशू कर दिया, सर्कुलर नंबर 5/2014, वो जो मैंने फार्मा वाला बताया था वो 5/2012 था, ये सर्कुलर 5/2014, इसका भी नंबर 5 है, बट ये 2014 का था। इसमें सीबीडीटी ने आशीष भाई लिख दिया था एक एक्सट्रीम स्टैंड लेकर कि नहीं, जो इंटरप्रिटेशन कोर्ट्स की कह रही है कि इनकम होना जरूरी है, टैक्स फ्री इनकम 14A की डिसअलाउंस के लिए, वो गलत इंटरप्रिटेशन है। हमारा मानना ये है सीबीडीटी का कि नहीं साहब 14A एओ तब भी इन्वोक कर सकता है जब टैक्स फ्री इनकम नहीं भी है। अब आपको पता है उसके बाद कई सारा हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, हमारा दिल्ली हाईकोर्ट का, मद्रास हाईकोर्ट का, और भी बहुत सारा हाईकोर्ट का पिछले 5-6 साल में, क्योंकि ये 2014 का सर्कुलर है ना। आप देखिए 2014 के बाद आज 8 साल हो गए, 8 साल में कई हाईकोर्ट ने, सुजंती साहब, क्वैश कर दिया इस सर्कुलर को कहकर कि सर्कुलर ही गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अल्ट्रा वायरस बोलते हैं। अल्ट्रा वायरस मतलब सीबीडीटी की पावर के क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि जो धारा 14 है जिसमें सर्कुलर दिया गया था, ये अल्ट्रा वायरस है। ये मैं नहीं बोल रहा, दिल्ली हाईकोर्ट का डॉक्टर मुरलीधर का 5-6 साल पहले, 4-5 साल पहले जजमेंट आया था जिसमें उन्होंने होल्ड किया था। अब इन्होंने कहा आशीष भाई अब 2022 में जागे, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि वो बहुत कुछ, क्योंकि ये घटना पिछले बजट के और इस बजट के बीच की नहीं है, ये बात कोरिलेट करना बहुत जरूरी है एक आदमी जो पढ़ना चाहता है, वो ये घटना पहले की है। तो अब इन्होंने कहा नहीं साहब वो सर्कुलर हमारा सही था, और ये सारे हाईकोर्ट जिन्होंने सर्कुलर को कह दिया कि अल्ट्रा वायरस है वो गलत थे। इन्होंने एक्सप्लेनेशन डाली है सेक्शन 14A में। नितिन जी मैं कोई क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा, काइंडली अलाउ मी यार। क्या होगा, मैंने आपके क्वेश्चन लेना चालू कर दिया ना तो मेरा जोधपुर वाला सेमिनार अगला वो भी खत्म हो जाएगा, और सुमित भाई का ये वाला प्रोग्राम आप लोगों को मैं सारी बात नहीं बताऊंगा। काइंडली बियर विद मी, सॉरी सर। मेरी बहुत इच्छा है मैं क्वेश्चन लूं, पर अभी आज समय नहीं है। आज मेरे को आउटलाइनिंग बताने दो, जो मेन बातें मेरे पास है सर, फिर किसी और दिन आपके साथ डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि बजट एक बार का नहीं है, ये बजट 10-15 बार पढ़ने का। विद ड्यू रिगार्ड सर। तो मैं कहा था सर, सेक्शन 14A की एक्सप्लेनेशन पे था। सेक्शन 14A की एक्सप्लेनेशन इन्होंने ये ऐड करी सर कि हमेशा से, आशीष भाई ये भी नया लैंग्वेज ऐड हुआ है, मतलब वातावरण जो एक्सप्लेनेशन का चल रहा है कि ये था और ये हमेशा था, ऑलवेज। आप सोच रहे लैंग्वेज, मतलब ये था और ये हमेशा था कि सेक्शन 14A तब भी लगाया जा सकता था जब कोई इनकम अर्न नहीं करी टैक्स फ्री। तो भाई साहब आप इसको क्या कहेंगे, ये प्रोस्पेक्टिव चेंज है? I can cite you those orders where Supreme Court has interpreted this language to be retrospective in nature. I will be very happy. I have always said in my seminars that I am an SSC man. I am not deployed. I am not employed or engaged by department. I am a SSC man. So I would be happy that if this amendment is prospective. But वो prospective का तो सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि आज तो डिविडेंड टैक्सेबल हो गया है। ये तो लाया ही गया उस अमेंडमेंट को, क्योंकि उन्होंने लिख दिया ना मेमोरेंडम में कि सर्कुलर सही था और जजमेंट गलत थे, ये लिख दिया उन्होंने। तो आज सवेरे डिबेट चल रही थी, नितिन कन्वर जी क्या आगे नहीं, कन्वर साहब बोल रहे थे नहीं ये प्रोस्पेक्टिव है। मैंने वहां बड़ा ह्यूमिलिटी से बोला सर कि जब कोई अमेंडमेंट आप बकायदा ये कह के कर रहे हैं कि कोर्ट की इंटरप्रिटेशन गलत थी और सर्कुलर वाज राइट, तो इसका क्या मतलब हुआ? कोई कोर्ट के सामने वो जाएगा तो वो तो ये कहेगा ना रेट्रोस्पेक्टिव है, फर्स्ट प्रिंसिपल लगाकर, रूडिमेंट्री प्रिंसिपल लगाकर, एलिमेंट्री प्रिंसिपल लगाकर। तो सेक्शन 14A का चेंज क्या हुआ सर, उसमें एक्सप्लेनेशन डाल दी और उसमें ये लिख दिया कि अगर आपको कोई टैक्स फ्री इनकम अर्न नहीं भी हो रही है तो भी सेक्शन 14A हमेशा लग सकता था, हमेशा लग सकता था। और सेक्शन 14A में एक नया वर्ड डाल दिया, ओपनिंग वर्ड, नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज, पावरफुल नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज, वेरी स्ट्रॉन्ग नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज, जो पूरे इनकम टैक्स एक्ट को ओवरराइड करेगा। वेरी स्ट्रॉन्ग नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज हैज बीन पुट इन द ओपनिंग पार्ट ऑफ सेक्शन 14A सबसेक्शन 1. So these are the 4 changes which I have just discussed on business head, which are generally income जो हम business head की देखते हैं, उनमें लगते हैं 3 तो business head के सेक्शन के ही थे। ये सेक्शन 14A वाला भी आशीष भाई जनरली business head का ही था। But anyhow, at least this tells us the tale, वो broader जो पिक्चर है वो क्रिएट हो गई ना यहाँ से कि ये अब यहाँ पर जो भी जजमेंट्स है वो फिर देखिए, जो पहले होता था, हम हिसाब जब हम कुछ समय पहले पढ़ते थे बजट, वो ढूंढते थे कि कोई जजमेंट क्या क्या ओवररूल हो गए, कब रेट्रोस्पेक्टिव हो गए, और वो चेंजेस पहले पढ़ो। तो वो वातावरण आशीष भाई फिर चालू हो गया।
अब दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज मैं जो डिस्कस करना चाहता हूँ शुरू में ही, जो प्रैक्टिकल भी है और जो रेलेवेंट भी है, सेक्शन 148 से संबंधित 4 चेंजेस। देखिए 148 आशीष भाई पिछले साल इन्होंने बहुत ब्यूटीफुल चेंज किया था, विच वी ऑल अपलॉडेड, कि जिसका पर्पस था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लेस लिटिगेशन एंड लेसर नंबर ऑफ केसेस टू बी रीओपन। ये मैं अपनी तरफ से बनाकर नहीं बोल रहा हूँ, ये फाइनेंस बिल 2021 के मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि नया 148 जब पिछले साल लाया गया तो उसके कौन से 3 गोल थे। नंबर 1 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, नंबर 2 लेस लिटिगेशन, नंबर 3 लेसर नंबर ऑफ केसेस टू बी रीओपन। अब इन्होंने पिछली बार वो चेंज करा आशीष भाई, अच्छी बात ये कि इन्होंने अपनी गलती मानी एक जगह, ये क्या मेमोरेंडम की हमने पिछली बार जो बहुत बड़ा चेंज किया था उसमें हमसे कई जगह त्रुटि रह गई, हम उस पर सुधार कर रहे हैं। तो चलो इस तरीके से इसको ब्यूटीफुल सेंस से देखा जा सकता है। टू एरर इज नो, टू एरर क्या कहते हैं, टू एरर इज ह्यूमन एंड टू करेक्ट द सेम इज द राइट जुडिशियल कंसेंस। मतलब ह्यूमन बीइंग से एरर किसी से भी हो सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला हुआ है। तो उन्होंने पिछले साल के जो चेंजेस थे उन्होंने ये माना अपनी गलती को कि हाँ हमसे काफी सारा डिफॉल्ट्स रह गया था ड्राफ्टिंग में, तो हम भी ठीक कर रहे हैं। ये मैं आपको कहां से पढ़ के बोल रहा हूँ, जो मेमोरेंडम फाइनेंस बिल 2022 के साथ। तो क्या 4 मुख्य चेंजेस हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि पिछले साल के बजट में जो 148 नया आया उसमें जो इस बार चेंज कर दिया सर। सेक्शन 148 जो नया है उसकी एक्सप्लेनेशन 1 है सर, ये डिसाइड करती है, बताती है हमें कि एक्सप्लेनेशन 1 कि व्हाट आर द केसेस इन व्हिच इट विल बी डीम्ड और इट विल बी ट्रीटेड दैट देयर इज एन इंफॉर्मेशन which suggests escapement of income in the hands of the assessee. Now it is an information centric escapement of income. There were 2 types of information which were spelled out in the last year 148 explanation 1. Number 1 was information flagged off in the computer of the account of the assessee, and number 2 was final audit objection of the Comptroller and Auditor General, that is CAG. Now they have made some cosmetic change in those 2 clauses sir. तो जयंती साहब पहले वाले में तो उन्होंने कह दिया कि वो फ्लैग वर्ड गलत लिखा हुआ है, तो फ्लैग वर्ड हटने से भाई साहब कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो उन्होंने पहले वाला बरकरार है। मतलब अगर किसी करदाता के अकाउंट पे कुछ इन्फॉर्मेशन आ गया इसका इनकम एस्केप होता है तो वो अभी भी 148 का रेलेवेंट रीजन है, बेस है। दूसरा उन्होंने फाइनल ऑडिट ऑब्जेक्शन के अंदर से पता नहीं फाइनल वर्ड हटा दिया आशीष भाई, ये 2 पढ़ाई, फ्लैग वर्ड हटा दिया, एक में फाइनल हटा दिया, पता नहीं इसका मटेरियल इंपैक्ट क्या बनेगा। ये तो आने वाले जमाने में जब भी 148 प्रैक्टिकल होने लगेगा, क्योंकि मैंने अभी तक नया 148 यूज करते हुए देखा नहीं है, इतने मेरे हाई कोर्ट के एक्सपीरियंस में। ये पुराने वाला ही लेकर चल रहे थे ना अभी तो 30 जून तक, आपको पता ही है। अच्छा अच्छी बात क्या थी सुजंती साहब, वो पुराने वाला जो लॉ इन्होंने यूज किया 1 अप्रैल के बाद और 30 जून तक, उसके अंदर जो जजमेंट आए थे हाई कोर्ट के, दिल्ली के, इलाहाबाद के और भी राजस्थान का, वो टच नहीं किया, वो ठीक है, उनको भी उन्होंने छेड़ा नहीं है, वी आर सेफ ऑन दैट। What is I am discussing first, जो नया explanation 1 है 148 का, उसमें पहले 2 clauses थे, information appearing in the account of the assessee and second is audit objection of the CAG. Now there are 3 new things, 3 new variants added in this. अब 5 हो गए सर, 3 क्या क्या नए हैं वो नोट कर लीजिए। अगर बाहर के किसी विदेश से कोई जो इंडिया ने एग्रीमेंट सेंटर किए हैं सेक्शन 90 के अंदर 90 और 90A में, उसमें आशीष भाई कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वो भी एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन बन जाए। दूसरा, अगर धारा 135A है इनकम टैक्स अधिनियम में, जिसमें कोई इंफॉर्मेशन आता है एसएससी का, तो वो भी 148 के लिए न्यू लॉ में बेस बन जाए। और तीसरा, अगर किसी ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से या कोर्ट के ऑर्डर से कुछ पता लगता है कि एसएससी का इनकम एस्केप हो रहा है, तो 3 नई चीजें डालनी है मनोज साहब। पहला, द इंफॉर्मेशन विच इज कमिंग फ्रॉम द ट्राइब्यूनल और कोर्ट विच सजेस्ट एस्केपमेंट ऑफ इनकम इन द हैंड ऑफ द एसएससी। सेकंड, सेक्शन 90 वाला जो उसको क्या नाम, एग्रीमेंट में कोई बाहर के देश से एग्रीमेंट में कोई इंफॉर्मेशन आ रहा है। और तीसरा, सेक्शन 135 कैपिटल ए के अंदर कोई इंफॉर्मेशन आ रहा है। तो टोटल मिलाकर 5 केसेस हो गए जहां पर आपका नया 148 में 148 हो सकता है। मैं ये सोचता हूं कि अब ये 5 हैं, अब आगे आगे इस ये परिवार भी, जैसे क्या है हमारे यहाँ बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जहां वो बुजुर्गों की कही भी कहावत यहाँ फिट होती है कि दूधो नाओ पूतो फलो, मतलब वो बढ़ोतरी पे रहते हैं, मतलब सब बढ़ोतरी पे हैं। टीडीएस का परिवार तो मैं हमेशा ही सोचता हूँ कि उसको तो कोई वरदान ही मिला हुआ है कि सर वो तो दूधो नाव, क्या वो तो पूतो ना, पता नहीं क्या नहाता है वो तो, हमेशा हर एक साल उसके अंदर 4-5 नया परिवार में सदस्य पैदा हो जाता है। और मेरे कभी टीडीएस समझ में नहीं आता कि क्यों ऐसा नहीं लिख देते कि हर एक चीज पे टीडीएस कटेगा जहां पर भी इनकम टैक्स है, बात खत्म होगी भाई साहब, हमें इतना याद ही नहीं करना पड़ेगा, ना इतना झमेला होगा, ना इतना सरदर्दी होगी। चलिए कोई बात नहीं, आप कहेंगे छोड़िए, अपने पॉइंट पे वापस आइए। सेक्शन 148 explanation 1, earlier there were 2 things, now there are 3 new things added, I have told you sir, that is one major change. Second major change is कि that पिछली बार सर सुजंती साहब जो 149 आया था उसमें उन्होंने लिखा था कि 3 साल से पीछे नहीं जाया जा सकता, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन आशीष भाई बोलते हैं आप एक्साइज लॉ में, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन, वो कंसेप्ट इनकम टैक्स में भी आ गया लास्ट ईयर 148 में। वो क्या है कि 3 साल से पीछे 10 साल तक तब जा सकते हैं जब 3 कंडीशन पूरी हो जाए, 50 लाख रुपए से ऊपर का एस्केपमेंट, कोई इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल इन द पोजीशन ऑफ द डिपार्टमेंट एओ,
एंड थर्ड असेट इन द पोजीशन, ये पहले तक था, अभी तक अमेंडमेंट से पहले असेट 50 लाख रुपए से ऊपर का मॉनेटरी थ्रेशोल्ड पर ईयर और इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल इन द पोजीशन ऑफ द ईयर। हमें लगा कि ये तो बहुत अच्छा चेंज हो गया भाई साहब, अब तो 3 साल से पीछे रीओपनिंग हो ही नहीं सकता जब तक कोई अनडिस्क्लोज असेट ना मिल जाए। अब वो मनस जी, वो हैप्पीनेस शॉर्ट लिव्ड थी, उसको नजर लग गई। नजर लग जाती है ना, जैसे हमारे यहाँ नजर लगती है तो फिर बत्ती करते हैं, उतार देते हैं, क्या करें, नजर लग गई भाई साहब। अभी नजर कैसी लगी, देखिए नजर ऐसी लगी कि इसमें इन्होंने 2 चीजें और डाल दी है। ये मैं बहुत कॉशियसली बोल रहा हूँ, नजर वर्ड। अब देखिए क्या क्या डाल दिया इन्होंने कहा असेट नहीं भी मिला, अगर हमें मिल गया, लाला जी ने या बिजनेसमैन साहब ने, भाई साहब ने कोई खर्चा कर रखा है, खर्चा तो एक्सपेंडिचर इन एनी ट्रांजेक्शन और एनी इवेंट और एनी ओकेजन, ये वर्ड लिखा हुआ है, एक्सपेंडिचर इन एनी ट्रांजेक्शन, एक्सपेंडिचर ऑन एनी इवेंट, एक्सपेंडिचर ऑन एनी ओकेजन, तो भी और असेट नहीं भी है तो भी आपका एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन्वोक हो सकता है। हाँ, 50 लाख का मॉनेटरी क्राइटेरिया एज इट इज है, वो इंक्रीमेंटिंग मटेरियल वाली कंडीशन भी एज इट इज। तो इसका मतलब क्या हुआ, डाइल्यूट हो गया ना असेट वाले के साथ। अब दूसरा वेरिएंट क्या डल गया, एक्सपेंडिचर। तीसरा भी सुन लीजिए, वो और भी खतरनाक है, एनी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मिल गई हैं और वो 50 लाख रुपए से ऊपर का क्वांटम है तो भी एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन सर डिपार्टमेंट इन्वोक कर सकता है एज पर न्यू 149 सेक्शन। तो देखिए आशीष भाई, हम किस तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं। मुझे लगता है लेफ्ट हैंड गिव समथिंग, राइट हैंड टेक्स इट बैक। पहले इन्होंने कहा कि साहब हम लेसर नंबर ऑफ केसेस चाहते हैं खुले, और उसमें असेट वर्ड डाला, राइटली सो, वेरी ब्यूटीफुली, समबडी हु हैज मेड इट वाज एब्सोल्युटली राइट। I don't know whether this new things which they have added was a slip in the last budget or they have now come up or they have now become wiser. they say कि नहीं हम तो ज्यादा केस खोल ही नहीं पाएंगे। This is I left to my viewers to explore and to do the brainstorming. So this second, धीरे धीरे लिस्ट बढ़ते जाएगी और एक्सप्लेनेशन आते जाएंगे। आपने मेरा मन का बात छीन लिया भाई साहब, आप बिल्कुल मेरे प्यारे भाई की तरह बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। ये तो भी शुरुआत है ना। अब एसेट हो गया, एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गया और एक्सपेंडिचर हो गया। Let us see how this law evolves in the future. So 2 चीज मैंने बताई सर, जहां 148 की एक्सप्लेनेशन 1 में 3 नई चीजें डाल दी जो बेसिस ऑफ 148 हो सकता है, 2 नई चीजें डाल दी एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन के लिए, असेट के अलावा एक्सपेंडिचर वाला और ये क्या नाम अपना एंट्रीज। तीसरा चेंज ये है कि जो सर्च और सर्वे की असेसमेंट नए लॉ में होंगी, नए 148 में होंगी, जो क्योंकि उन्होंने लिख दिया था कि 1/4/21 के बाद जितनी भी सर्च हो रही है, सर्वे हो रही है, उनका भी असेसमेंट न्यू 148 में ही होगा सर। तो उन्होंने ये प्रोविजन बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन डाला, ये पॉजिटिव प्रोविजन है कि 148B दे से इन एनी असेसमेंट आफ्टर सर्च और आफ्टर सर्वे व्हिच इज हैपनिंग इन द न्यू 148 regime will also be subject to the mandatory prior approval of the concerned joint commissioner range head. So this is an approval which has to be taken at the time of assessment completion in those cases where the assessment is made under 148 after search or after survey. I hope it is clear, 148 capital B. फोर्थ चेंज इज दिस आशीष भाई, वो भी अब देखिए 148A पिछली बार इन्होंने डाला, उसमें लिखा कि हम 148 करने से पहले प्री इंक्वायरी करेंगे, जैसे एक्साइज वगैरह में होता है, शूको से पहले आपको बुलाएंगे, पूछेंगे कि आपका कुछ एस्केपमेंट है या नहीं है। अब उसमें इन्होंने एक अभी उसको पूरा अभी वो मैच्योर ही नहीं हुआ, उसमें एक्सेप्शन डालना चालू कर दिया कि ये 148 है, यहाँ नहीं लगेगा। अब उसमें एक एक्सेप्शन डाल दिया कि जहां 135A का इंफॉर्मेशन आएगा वहां 148A का प्री इंक्वायरी नहीं होगा। आप समझ रहे हैं मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ? तो ये 4 इंपॉर्टेंट चेंजेस थे सर जो मेरे को लगा कि आई शुड फ्लैग इन द सेक्शन 148। एंड वो पिछले बार का जो चेंजेस था अभी हम उसको डाइजेस्ट भी नहीं कर पाए थे या उसके साथ हमें उसको लेकर चलना था, अभी नए चेंजेस आ गए। एनीहाउ चलिए मेरे को लगता है ये लॉ इवॉल्व कर रहा है। तीसरा एरिया जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, चैरिटेबल ट्रस्ट। सर प्लीज पार्डन मी, आई हैव टू बी क्विक, बट आई एम टेलिंग यू द एरियाज। आशीष भाई, पूरा इनकम टैक्स एक्ट फिर से चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए टच कर दिया। हम जब स्टूडेंट थे, मैं उस समय से सरल भाषा में बताता हूँ कि जब हम स्टूडेंट थे तो सर भाई हमें बहुत कम सेक्शन पढ़ने पड़ते थे चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पर अब मनस साहब जो चैरिटेबल ट्रस्ट का जो प्रोविजन हो गया इनकम टैक्स एक्ट में, आप बोल सकते हैं लैंडस्केप हो गया, वो दिन रात का अंतर आ गया सर। पिछली बार का बजट ही ले लीजिए, फाइनेंस एक्ट 2021, उसमें कितने सारे चेंजेस थे। तो 6 चेंजेस मुझे लगता है, 5 या 6 चेंजेस हैं जो चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर आप लोगों को नोट करने पड़ेंगे सर क्विकली। पहला चेंज तो ये है कि जो चैरिटेबल संस्था, मैं सेक्शन 11 के संदर्भ में बताऊंगा आपको, और जो भी सेक्शन 11 के संदर्भ में बताऊंगा वो 1023C के जो सब क्लॉज 4, सब क्लॉज 5, सब क्लॉज 6 और सब क्लॉज 6A वाले इंस्टीट्यूशन है उन पे भी लगेगा। इन्होंने समानांतर चेंज कर दिया, 1023 कैपिटल C में 4, सब 4 में, 5 में, 6 में, 6A में और सेक्शन 11 में। तो मैं सेक्शन 11 को ले रहा हूं क्योंकि उसको बताने में सरलता होगी और आपको समझाने में सरलता होगी। तो सेक्शन 11 क्या है कि वो उन पे लगता है माना साहब जो सेक्शन 12AA में 12A में रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड संस्था है।
तो सेक्शन 11 में इन्होंने सब सेक्शन 1 के अंदर एक एक्सप्लेनेशन डाला है, उस एक्सप्लेनेशन का नंबर नोट कर लीजिए, एक्सप्लेनेशन 3A और एक्सप्लेनेशन नंबर 3B। देखिए आशीष भाई, एक्सप्लेनेशन के अंदर भी 3A अल्फाबेट आ गया, 3B। तो क्या लिख रहे हैं इस एक्सप्लेनेशन 3A में और 3B में? कहां डाली है? 11(1) में। और ये किसको लग रही है? ये कह रहे हैं कि जो भी चैरिटेबल संस्था जिसके अंदर कोई प्रॉपर्टी, मॉस्क है, मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, चर्च है, उसको पैसा मिलता है उनकी रिपेयर कराने के लिए, रेनोवेशन कराने के लिए, तो वो संस्था जिसको पैसा मिल रहा है वो उसको कॉर्पस मान सकती है, बशर्ते वो 4 कंडीशन का पालन करे। रिपीट करता हूं सर, चैरिटेबल ट्रस्ट हैविंग टेम्पल ऑब्लिक चर्च ऑब्लिक मॉस्क ऑब्लिक गुरुद्वारा receives any money sum in relation to repair oblique renovation of the concerned building, then that can be treated at the option of the institution to be corpus in nature, provided the trust complies with 4 conditions. What are the 4 conditions, sir? कि उसकी आइडेंटिटी कॉर्पस की मेंटेन रखेंगे, मतलब उसको अलग से सुरक्षित रखेंगे, उस पैसे को जो रिपेयर के लिए आ रहा है, अगर कॉर्पस मान रहे हैं। दूसरा, उसको किसी और जगह इन्वेस्ट नहीं करेंगे जो 11 सबसेक्शन 5 में परमिटेड नहीं है। तीसरा, आप उसको किसी आदमी को और को नहीं दे देंगे और उसका मिस यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे। ये 2 कंडीशन है, मतलब ना तो आप किसी और संस्था को उसको दे देंगे और ना आशीष भाई उसको आप अनऑथराइज पर्पस के लिए यूटिलाइज करेंगे। और इन चारों में से अगर आप किसी कंडीशन का कभी कॉर्पस मानने के बाद उल्लंघन कर देते हैं तो जिस साल में उल्लंघन करेंगे उस साल का वो एक्सप्लेनेशन 3B के तहत डीम्ड इनकम बन जाए इन द हैंड्स ऑफ द ट्रस्ट। तो दिस इज द चेंज इन एक्सप्लेनेशन 3A एंड 3B। अब एक और बात पे आ जाइए मनोज साहब, ये बड़ा रेडिकल चेंज है और ये सब आप नोट कर लीजिए क्यूरियोसिटी के साथ। ये आप जो भी लोग चैरिटेबल ट्रस्ट का बहुत काम करते हैं, ऑडिट करते हैं और रिटर्न फाइलिंग करते हैं सर, इन्होंने एक नया एक्सप्लेनेशन डाला आशीष भाई। 11 सेक्शन के अंदर सब सेक्शन 7 हैं, उसके नीचे एक नया एक्सप्लेनेशन डाला गया है। वो कहता है कि आप कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट जिसको कोई भी एप्लीकेशन ऑफ इनकम लेना है, वो एप्लीकेशन इनकम उसको मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो फॉलो करता है हम उसके हिसाब से नहीं देंगे, हम उसके एक्चुअल पेमेंट पे देंगे। तो आप मान सकते हैं कि पूरा 43 भी यहां डाल दिया गया। आप समझ गए सर कि आपको, मतलब आप चाहे रेवेन्यू मनोज साहब मर्केंटाइल पे दिखा रहे हैं चाहे कैसे दिखा रहे हैं, ये हाइब्रिड हो गया कुछ। अगर अब आप, ये प्रोस्पेक्टिव प्रोविजन है, इस एक्सप्लेनेशन का कहने का मतलब ये है कि कोई भी एप्लीकेशन ऑफ इनकम जो रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट को मिलेगा वो सिर्फ पेमेंट बेस पे मिलेगा। दैट इज एक्सप्लेनेशन एडेड बिलो सबसेक्शन 7 ऑफ 11 सेक्शन 11 एंड इट कवर्स एंटायर सेक्शन 11। मे इट बी नोटेड, ये सारे पूरे सेक्शन 11 को लगता है। मतलब आप सोचिए कि किसी भी टाइप का एप्लीकेशन आपको अलाउ नहीं होगा जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे। आई होप यू नो यू आर नोटिंग द ग्रेविटी ऑफ द चेंज। थर्ड पॉइंट इज सर which I want to flash and highlight is section 12A subsection 1 Roman B। इन्होंने इस 12A 1B में ये हाईलाइट किया है सर कि अगर आप चैरिटेबल ट्रस्ट हैं और आपको अपना चैरिटेबल ट्रस्ट का जो स्टेटस है वो बरकरार रखना है, कायम रखना है और उसको इंटैक्ट रखना है, तो आपको वो खाते भी मेंटेन करने पड़ेंगे जो अभी भविष्य में रूल मेकिंग बॉडी सीबीडीटी प्रिस्क्राइब करेगा, और वो आप वहां रखेंगे प्लेस और मैनर जो सीबीडीटी बताएगा। ये कहां लिखा है? 12A सब रूल 1 और B। अभी आशीष भाई एक बात बहुत बोल रहे थे, ये मैं उससे कनेक्ट कर रहा हूं कि कंप्लायंस का जो क्या कहते हैं ना फैक्टर है, वो कहीं ना कहीं, मतलब सॉरी टू से, ये ईज ऑफ बिजनेस नहीं है। एटलीस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए ये डिजर्विंग चेंजेस नहीं है बहुत ज्यादा सर। कोई आदमी कह सकता है कि बुक्स नहीं रखने से कोई फ्रॉड थोड़ी ना हो जाता है, जो अगर होगा तो उसको आप कैंसिल कर सकते हैं, आपके पास सारी पावर है। पर आप उसको खाते क्यों रखवाना चाहते हैं? आपको इतना, हमारे को प्यार हो सकता है सीए, हम मैं भी बीएनए से सीए हूं आशीष भाई, चाहे मैं एडवोकेट बन गया हूं, पर हमारे को भाई खातों से मनस साहब प्यार है, समझ में आता है। विभाग को भाई खातों से इतना प्यार क्यों है ये समझ में नहीं आता, जबकि वो भाई खाते सही होते तो कहते नहीं ये तो इनके अकाउंटेंट ने ऐसे ही बना दिए होंगे, ये तो इनकी तो आपस में दोस्ती भाई बंदगी रहती है, ऐसे थोड़ी ना होता सर। मतलब सही हो जाए तो भी गलत और ना मेंटेन करे तो भी गलत, तो क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि चाहे हम इधर से गिरे चाहे उधर से गिरेंगे हम ही, तो कुछ भी हमारे को चोट लगनी चाहिए। 12A 1B। अगला चेंज ये है सर, इसमें सेक्शन 13 सबसेक्शन 10, अभी 4 हो रहे हैं मनस साहब, सांस ले लीजिए, 4 हो रहे हैं, अभी तो 3 आधे बताए। सेक्शन 13 सबसेक्शन 10, और ये भी मैंने सेलेक्ट किए हैं, चेंजेस तो ज्यादा हैं, ये तो मैंने अपने हिसाब से हाईलाइट किया अपनी विवेक के हिसाब से। सेक्शन 13 सबसेक्शन 10 क्या है? अगर कोई चैरिटेबल संस्था जो 12AA में रजिस्टर्ड है, जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन है, वो कोई बिजनेस इनकम अर्न करती है सर, या वो बुक्स मेंटेन नहीं करती है या प्रॉपर ऑडिट नहीं कराती है, तो उसका इनकम कंप्यूटेशन करने का एक नया फार्मूला दे दिया है सेक्शन 1310 में, और वो फार्मूला एप्लीकेशन ऑफ इनकम के बेस पे नहीं है, मोटा मोटा एक्सपेंडिचर बेस्ड है। और उसमें 1310 पे वो क्या कहते हैं सर, अभी रुक जाइए प्रगति मैडम प्लीज, काइंडली डोंट डिस्ट्रैक्ट मी प्लीज।
मैं बता रहा हूँ, ये मेरे को सुमित भाई अलग निगाहों से देख रहे हैं, ये मेरे को अननेसेसरी खाम का, मैं आप मुझे वो मत करिए सर, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। क्योंकि क्या मैं आपको बता ही नहीं पाऊंगा, अगर क्वेश्चन में चला गया तो ये मैं बता रहा हूँ, ये कई 10 दिनों तक चैरिटेबल ट्रस्ट चलता रहेगा सर डेफिनेटली वी विल नॉट टेक अप वो दिल मांगे मोल मेरा भी करता है, आपका भी करता है, सब जगह करता है सर। Right, क्या sir. करें अभी, क्या करें सर, अगला भी बोल रहा है ना, वो जोधपुर वाले नाराज हो जाएंगे मेरे दोस्त। और क्या है कि वी हैव टू कीप, अच्छा ये अभी फाइनल नहीं हुए, जब बजट फाइनल हो जाएगा तो हम और चेंजेस करने ही पड़े, आपको डिस्कशन करनी पड़ेगी। सुन भाई, सेक्शन 13 सबसेक्शन 10 में बता रहा था, if a charitable trust happens to earn some business income which otherwise is not permitted under section 2 clause 15 proviso read with section 13 subsection 8, तो वो बिजनेस इनकम उसकी नॉर्मल मैनर में कंप्यूट नहीं होगी, उसको अलग तरीके से कंप्यूट किया जाएगा। मतलब उसमें आपको खर्चे मिलेंगे आशीष भाई, और वो खर्चे हिंदुस्तान में जो आप करेंगे वो, और जो रेवेन्यू नेचर के हैं, कैपिटल नेचर के नहीं है वो। और तीसरा, जिसमें वो चारों कंडीशन जो उन्होंने लिखी हैं सेक्शन 13 सबसेक्शन 10 में 4-5 कंडीशन लिखी है, जैसे वो 40A3 भी उन्होंने उसमें डाल दिया है, 40AIA भी उसमें डाल दिया है, आप समझ रहे हैं। तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 10 इज ए स्पेशल इनकम कंप्यूटेशन प्रोविजन for those charitable institutions which happen to violate some condition prescribed. Number 1, earning some business income or not maintaining books properly or not getting audit. Then his income will be computed in the manner defined in section 13 subsection 10. अगला चेंज है सर 12AB सबसेक्शन 4 एंड 12AB सबसेक्शन 5। ये पिछले साल के ही सेक्शन थे, इन्होंने इसको फिर चेंज कर दिया है, 12AB सबसेक्शन 4 एंड 12AB सबसेक्शन 5। इसमें क्या था सर कि कमिश्नर साहब ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैसे कैंसिल कर सकते हैं, ये इन्होंने पहले 12AA होता था शुरू में, फिर 12AB आ गया, फिर इन्होंने 12AB को फिर दोबारा सब्स्टिट्यूट कर दिया, नया बना दिया है। तो इसमें मनज साहब, एडिशनल पावर्स आर गिवन टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स दैट इन एडिशनल सर्कमस्टांसेस द कमिश्नर कैन डीरजिस्टर द चैरिटेबल ट्रस्ट। आप कहेंगे वो कैसे है, इसमें आप एक चीज नोट कर लीजिए पढ़ने के हिसाब से और लिखने के हिसाब से, स्पेसिफाइड वायलेशन वर्ड यूज किया गया है, स्पेसिफाइड वायलेशन। जो भी चैरिटेबल संस्था कमिश्नर साहब को लगेगा कि स्पेसिफाइड वायलेशन क्या कर रही है, वो उसको उन्होंने बताया स्पेसिफाइड वायलेशन क्या क्या होंगी, तो वो कमिश्नर साहब चैरिटेबल ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का प्रोसीडिंग चालू कर सकते हैं। आपको नेचुरल जस्टिस देंगे, आपसे पूछेंगे कि क्या स्पेसिफाइड वायलेशन हुआ है नहीं हुआ है, अगर आप उनको सेटिस्फाई कर देते हैं तो प्रोसीडिंग ड्रॉप हो जाएगी मनज साहब, और सेटिस्फाई आप समझते हैं, और सेटिस्फाई नहीं कर देंगे तो प्रोसीडिंग्स आपकी करण जी, फिर आपको आपका रजिस्ट्रेशन उड़ भी सकता है। तो दो बातें हैं, एक तो 12AB सबसेक्शन 4 अब कमिश्नर साहब को एडिशनल पावर्स देता है, लेग स्पेस देता है कि जहां वो अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का जो पावर है वो एक्सपेंडेड मैनर में यूज कर सकते हैं। आप कहेंगे कैसे, उन्होंने 3 कंडीशन डाल दी है जिसके बेस पे 12AB इनिशिएट हो सकता है। नंबर 1, जहां कमिश्नर साहब को खुद ऐसा लगता है कि ट्रस्ट ने कोई स्पेसिफाइड वायलेशन किया है। दूसरा, उनको एओ साहब ने जानकारी भेजी है असेसमेंट में के दौरान 143(3) के दौरान। और तीसरा, कोई कंप्यूटर से उनको पता चला रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी से कि इस चैरिटेबल ट्रस्ट की हेल्थ सही नहीं चल रही करण भाई, मतलब इस चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ कुछ गोलमोल है। 3 कंटीजेंसीज हैं जहां पर 12AB 4 के हिसाब से कमिश्नर कैन इनिशिएट प्रोसीडिंग्स ऑफ डी रजिस्ट्रेशन। वो 3 कंटीजेंसीज अलग अलग हैं, एक में तो खुद नोटिस कर सकते हैं, एक में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की मदद से कर सकते हैं कि साहब ये ट्रस्ट का कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज है, और तीसरा उनको एओ रिकमेंड कर सकता है। अब वो करेंगे कहां का सुजंती साहब, पहले जितनी भी एरियाज थे जहां ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन विड्रॉ हो सकता था उन्होंने उसको तो बरकरार रखा है, उसमें कुछ घटाया नहीं है। अब इसमें बढ़ोतरी क्या की गई है वो नोट कर लीजिए सर। अगर ट्रस्ट ने खाते प्रॉपरली नहीं रखे, खाते मतलब समझ गए ना सर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और दूसरा उस ट्रस्ट ने कोई ऐसी इनकम अर्न कर ली जो उसके ऑब्जेक्ट, परमिटेड ऑब्जेक्ट है, बायलॉज है, उसके बाहर है, तो इन दोनों सूरत में भी कमिश्नर इसको स्पेसिफाइड वायलेशन मानकर रजिस्ट्रेशन विड्रॉ कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। दोबारा रिपीट करता हूं, जहां बुक्स नहीं रखी प्रॉपर या कोई इनकम अर्न कर ली जो उसके ऑब्जेक्ट के बाहर है, ट्रस्ट के परमिटेड ऑथराइज्ड ऑब्जेक्ट के बाहर, तो इनको क्या नाम दिया, स्पेसिफाइड वायलेशन। और सेक्शन कहां डिस्कस कर रहे थे, 12AB सबसेक्शन 4 एंड 12AB सबसेक्शन 5। तो कैंसिलेशन का जो स्कोप है वो बढ़ गया है। दूसरा, इसके साथ एक प्रोविजन सर मैं डिस्कस करना चाह रहा था, स्पेसिफाइड वायलेशन की हमने बात करी, हम स्पेसिफाइड इनकम की बात कर रहे हैं। 115 BBI 115 BBI प्लीज 115 BBI क्या है सर, 115 BBI ये है करण भाई, 115 BBI कहता है कि अगर चैरिटेबल ट्रस्ट जो सेक्शन 11 वाला या 1023C वाला है, उसको कोई इनकम मिलती है सर जो स्पेसिफाइड इनकम है, मैं अभी स्पेसिफाइड वायलेशन बताया एक वर्ड, अब ये स्पेसिफाइड इनकम है, वो बता रखी है 115 BBI में किसको स्पेसिफाइड इनकम कहेंगे, आप नोट करना चाहें, 5 टाइप की इनकम को स्पेसिफाइड इनकम बोला गया है। पहली इनकम तो वो इनकम है जहां कोई चीज आपने एक्यूमुलेशन किया चैरिटेबल ट्रस्ट ने सर, वो एक्यूमुलेशन उसका फेल हो गया, रिजेक्ट हो गया। दूसरा, उसने कोई एक्यूमुलेशन किया करण जी चैरिटेबल ट्रस्ट ने, और वो एक्यूमुलेशन करने के बाद उसने उसको गलत यूटिलाइज कर लिया एक्यूमुलेटेड फंड को। तीसरा,
चैरिटेबल ट्रस्ट ने कोई ऐसा काम कर दिया कि जहां उसने किसी ऐसे रिलेटेड पर्सन को बेनिफिट पहुंचा दिया अपने ट्रस्ट के रिलेटिव को, जो उसको 13 सबसेक्शन 1C में प्रोहिबिटेड है, 13(1)(c) में। तीसरा, उसने चैरिटेबल ट्रस्ट ने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दी जो सेक्शन 11(5) में उसको परमिटेड नहीं है, उसने शेयर वेयर में कहीं पैसा लगा दिया। पांचवा एक और है जहां 11(1)(c) का वायलेशन किया है। तो मतलब सब 5 एरियाज हैं जिसको स्पेसिफाइड इनकम में टारगेट किया गया है। नंबर 1 एक्यूमुलेशन, इनकरेक्ट एक्यूमुलेशन, इलीगल एक्यूमुलेशन। दूसरा अनऑथराइज मतलब मिसयूटिलाइजेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड फंड्स। तीसरा 13(1)(c) का वायलेशन, सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 रोमन सी। आपको पता है ना सर, 13(1)(c) चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए एक मॉडल कंडक्ट है जहां वो कहता है कि रिलेटेड पर्सन को आप अनुचित बेनिफिट नहीं पहुंचाएंगे, अनुचित मतलब अनजस्टिफाइड बेनिफिट। और 13(1)(d) है, वो कहता है कि नहीं आप गलत जगह पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जो मोड परमिटेड मोड नहीं है 13(1)(d). तो उनको उन्होंने क्या किया है, अगर ऐसा वायलेशन हुआ तो उस इनकम को वो स्टैंड अलोन इनकम मानकर 115 BBI वाली स्पेशल इनकम मानकर उसको 30% टैक्स कर देगा, 30%। आई होप इट इज क्लियर टू यू। 115 BBI सर। लास्ट चेंज इन दिस in this my itinerary is 271 AAE। इस चैरिटेबल ट्रस्ट का करण भाई लास्ट चेंज ये है 271 AAE। ये कहता है कि अगर आपने कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है और आपने कोई पैसा ऐसी वही 13(1)(c) के हिसाब से कोई रिलेटेड पर्सन को अनुचित बेनिफिट पहुंचा दिया है, तो मनस साहब रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है, इनकम स्पेशल टैक्स भी हो सकती है 115 BBI में, और पेनल्टी भी लग सकती है। तीनों चीजें हो सकती है। तो सावधान, 271 कैपिटल AAE कहता है कि अगर किसी संस्था ने, चैरिटेबल संस्था ने किसी रिलेटेड पर्सन को बेनिफिट पहुंचाया, तो जितना बेनिफिट पहुंचाया पहली बार तो उतनी पेनल्टी लगा देंगे ये साहब। अगर आप बार बार बेनिफिट पहुंचाते रहते हैं तो अगली बार 200%। सुजंती साहब, तो सावधान सावधान, जैसे वो बोलते नहीं सावधान सावधान सावधान, तो सावधान ये है कि भैया आप चैरिटेबल ट्रस्ट हैं और आप कोई एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, आप कंसल्टेंट है, तो आप एडवाइजरी जारी कर दें अपने क्लाइंट के लिए कि भैया जो रिलेटेड पार्टी है ना आपका, उसके साथ कोई भी ट्रांजेक्शन करते वक्त 100 बार सोच ले भाई साहब। उसको 115 BBI भी बोल दीजिए और 271 AAE भी बोल दीजिए। एम आई क्लियर? तो बी क्वेश्चन सर। तो कहने का मतलब ये है सर, ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट के चेंजेस है ना, इनसे एक बात मनस जी निकल के आएगी, वो चाहते नहीं कि ज्यादा चैरिटेबल ट्रस्ट उनसे एग्जेम्पशन ले आते, और या वो चाहते हैं कि आप बिना चैरिटेबल ट्रस्ट के ही अच्छे हैं। इन दोनों में से कोई बात लगती है भाई साहब, तभी इतने सारे चेंजेस है, वरना तो आदमी चैरिटी करेगा क्यों? मैं हूंगा तो सुजंती साहब, मैं सोचूंगा मैं चैरिटी कर रहा हूँ या मैं कोई अपराध कर रहा हूँ। मतलब मैं इतने सारे प्रोविजन को पढ़ूंगा, समझूंगा, उनका पालन करूंगा, कंसल्टेंट रखूंगा, उसको फीस दूंगा, और उसके बाद लिटिगेशन का मुंह देखूंगा। सीताराम राधे श्याम, बाकी बिहारी लाल की जय हो सर, प्रभु की कृपा बनी रहे सब पे। तो ये चेंजेस तो ऐसे ही हैं जिनमें भगवान की प्रार्थना बार बार ही करनी पड़ती है सर, कोई गलत चीज ना लग जाए हमारे से टच हो जाए। चलिए अगला चेंज जो सेट ऑफ प्रोविजन है वो सुमित भाई ज्यादा, या मान लीजिए जो लोग पता नहीं, सुमित भाई मुझे लगता है कि करते हो। सुमित भाई आप क्रिप्टो करेंसी से तो वाकिफ होंगे हैं, ये करण भाई होंगे। तो देखिए क्या है, जीरो। देखिए अब क्या है, वो चेंज जो उन्होंने किया वो 3 सेक्शंस में है। अब मैं चौथी चीज पे आ गया हूँ भाई सब, चौथा मतलब चौथा बास्केट है ये, चौथा चेंज कंपार्टमेंट, वर्चुअल डिजिटल एसेट। 3 श्रृंखला के अंदर चेंज है, सेक्शन 2 क्लॉज 47 कैपिटल ए, सेक्शन 115 BBH और सेक्शन 194 कैपिटल एस। आप नोट कर लीजिए, सेक्शन 2 क्लॉज 47 कैपिटल ए, सेक्शन 115 डबल BH एंड सेक्शन 194 कैपिटल एस। तो 247 आपको क्या दे रहा है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट की परिभाषा बता रहा है। उसमें 3 क्लॉजेज हैं 247 ए में, और जहां आप वर्चुअल डिजिटल एसेट को ट्रांसफर करते हैं और उससे कोई इनकम पैदा होती है, वो आपको 115 BBH बोलता है कि जो इनकम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट से पैदा होगी वो धारा 115 BBH के तहत 30% के हिसाब से टैक्स हो जाएगी। अब ये आशीष भाई आगे, आशीष भाई देखिए क्या है, इन्होंने 115 BBH तो बना दिया, ये भूल गए कि सेक्शन 14 में 5 हेड होते हैं और 5 हेड के अंदर इस इनकम को कहीं तो डालना पड़ेगा ना। तो सेक्शन 14 के पांचों हेड में कहीं अमेंडमेंट है और ना सेक्शन 2 क्लॉज 24 इनकम कंसेप्ट में अमेंडमेंट है। सीधा आपने एक स्पेशल इनकम का सेक्शन बना दिया 115 BBH, और उसमें क्या कह रहे हैं कि अगर आपने वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफर किया और उससे कोई इनकम आई जिसमें उन्होंने लिखा है कि सिर्फ कॉस्ट का बेनिफिट मिलेगा, अब पता नहीं वो इनकम निकलेगी कैसे, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, और उसका हेड ऑफ टैक्स क्या होगा। या क्योंकि किसी ने कहा कि कैपिटल गेन में ही आएगा, भाई ये सब assumption है सर। You have to make a proper amendment in the head of tax also. You have to give proper computation mechanism also. You have to include it in the definition of word income also. Sense that can you make a special rate of tax 115 BBH?
115 BBH क्या कहता है? एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट शैल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%। और इनकम बताने के नाम पे उन्होंने सिर्फ इतना बताया, कुछ भी खर्चा नहीं मिलेगा सिवाय कॉस्ट के। साथ में कॉरेस्पॉन्डिंग एप्लीकेशन लगा दी है सुमित जी उस आदमी की, जिससे जो 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 वर्चुअल डिजिटल एसेट ले रहा है ना, और जिससे ले रहा है उसका टीडीएस भी कटेगा 194 एसपी। अब आशीष भाई, मेरी सेंसेस मुझे अभी तक समझ आ नहीं पाई है कि ऐसी ट्रांजैक्शन जो पूरी नोशनल होती है, जिनमें अदरवाइज इनकम ट्रांसफर नहीं होती है, उसमें टीडीएस जैसी चीज की कल्पना करना, आप समझ रहे हैं? क्योंकि इसमें तो एक अंडरलाइंग वैल्यू होती है ना उसकी, वो कोई अदरवाइज मनी थोड़ी ना ट्रांसफर हो रही होती है। तो आप टीडीएस काट के जमा कैसे कराएंगे? और मान लीजिए उन्होंने लिख दिया कि नहीं, अगर ऐसा है कि आप पैसा नहीं दे रहे हो, टीडीएस नहीं काट सकते, तो आप इंश्योर करेंगे दूसरा आदमी सामने वाला अपना टैक्स जमा करा रहा है। भाई साहब, ये डिडक्टर क्या, मतलब सॉरी, डिडक्टर के पास कितनी पावर्स हैं कि वो डिडक्टी के पीछे जाएगा और उसको कहेगा कि भैया तुम मुझसे बेनिफिट ले रहे हो, पहले पैसा जमा कराओ, तब मैं तुम्हें कंसिडरेशन दूंगा इसकी वर्चुअल डिजिटल एसेट की। हाउ इज दिस पॉसिबल? मतलब आई डोंट नो प्रैक्टिकली कैसे होगा। जो लोग इस क्रिप्टो करेंसीज में काम करते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट में, क्या ये संभव है सुमित भाई उसके पीछे जाना और उसको ये इंश्योर करना कि सामने वाला आदमी अपना टैक्स जमा करा दे तभी कंसिडरेशन पास ऑन हो? सर एक पॉइंट इसमें थोड़ा सा, हालांकि टाइम का अभाव है, फिर भी एक छोटा सा नहीं पॉइंट। आशीष भाई, आपको लिबर्टी तो मान लो कोई भी पार्टी है वो वजीरक्स से ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो वजीरक्स एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे जाके किसी ने बिटकॉइन खरीदा, तो उसने अपनी आईएनआर करेंसी को यूएसडी में कन्वर्ट किया, बिटकॉइन खरीदा, बिटकॉइन 2 महीने बाद में बेचा, और उसने बिटकॉइन बेचने पे उसने प्रॉफिट कमा लिया। वो प्रॉफिट अब जो उसके बिटकॉइन, उसके जो अकाउंट में, वजीरक्स अकाउंट में है। तो पहला पॉइंट ये, जो टीडीएस काटने की बात, और बिटकॉइन जो है वो बाहर की एंटिटी है। तो पहली बात तो ये है कि जो टीडीएस काटना है वो वजीरक्स काटेगा कि बाहर वाला काटेगा? वजीरक्स कौन है इसमें ब्रदर? वजीरक्स एक प्लेटफॉर्म है, जो प्लेटफॉर्म मेरे को उस क्रिप्टो करेंसी में सेल परचेज करवाता है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज समथिंग लाइक। हाँ, स्टॉक ब्रोकर बोलेंगे जिसको, एक्सचेंज की बजाय। ओके ओके, फैसिलिटेटर हो गया। हाँ, तो अब और क्रिप्टो करेंसी वाले तो सब बाहर बैठे हैं, तो वो टीडीएस काटेगा कौन? नहीं, इसमें लिखा है ब्रदर, मैं बताता हूँ आपको, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ सर इसमें क्या लिखा है इन्होंने। एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू ए रेजिडेंट एनी सम बाय वे ऑफ कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। और उसमें नीचे इन्होंने क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस स्पेसिफिक पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू ए रेजिडेंट, रेजिडेंट के लिए, क्योंकि नॉन रेजिडेंट के लिए तो 195 वाला प्रोविजन है, वही चलता है। तो ये वजीरक्स है वो काटेगा। पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पेमेंट कौन है पूरी ट्रांजैक्शन में? आपको ये मतलब वो- पीवीटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है, ये इंपॉर्टेंट। सर इसमें पेमेंट करने वाला तो वजीर है ही नहीं ना। नहीं, पर जैन साहब सी नहीं है, पर आप देखो ना, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप जैन साहब किस किस के बीच में है? आप मेरी बात समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं समझ गया। मान लीजिए आप वजीर एक्स हो और मैं कपिल गोयल हूँ, तो मतलब मेरे बिहाफ पे जब ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो तो आपके ऊपर ओनर्स आ जाएगा। पर्सन सी क्वेश्चन इज दिस, चाहे पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पेमेंट आप मुझे कहो चाहे आपको, 2 बार मेरे आपके बीच में तो कोई टीडीएस आएगा नहीं ना, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में। वो तो जब मेरे बिहाफ पे कोई सामने वाला बंदा सामने वाले दूसरे बंदे से जो डिजिटल एसेट खरीद रहा है, तो वो उस समय इंश्योर करेगा कंप्लायंस टीडीएस का, क्योंकि यू सी अल्टीमेटली वही तो आशीष जी यही तो कह रहे हैं कि वजीर एक्स तो एक केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बिटकॉइन खरीदने का माध्यम है। अब वजीर एक्स तो कुछ कर ही नहीं रहा, बिटकॉइन तो बाहर वाले को हमने खरीदा और बाहर ही बेच दिया, पेमेंट ना वजीर के पास आ रहा। वजीर तो एक प्लेटफॉर्म है, तो हिंदुस्तान का बंदा नहीं है जिससे ये ट्रांसफर हो रहा है आपको वर्चुअल डिजिटल ना, वो तो केवल एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है कि भाई आप कहीं परचेज कर सकते जैसे हैं। इसमें आप देखो ना ब्रदर, क्या बात है, देखो इसमें क्या बात है जैन साहब, आई प्लीज टेक दिस क्वेश्चन। अब आपको एग्जांपल बताता हूँ, अमेज़न है सर, अमेज़न है, सुन रहा हूँ। अमेज़न के अकाउंट में ना पेमेंट, वो कह रहे हैं आशा मैडम डायरेक्ट क्या कहते हैं, जो अमेज़न पे जो सेल कर रहा है उसके अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट जा रही है सर, और अमेज़न सेलर के अकाउंट से कमीशन ले रहा है। मैं समझ गया आपकी बात सर। भाई साहब क्या है, देखो जैन साहब, देखो मुझे क्या लगता है, मैं अभी आपको हम्बली देखो बोल रहा हूँ, ये हम सबको एक जैसा पता है। आप इसमें एक चीज नोट करो, जैसे पिछली बार आप लोग टीडीएस में जब फंस गए थे ना, टीसीएस में, मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया भाई साहब, वो जो रिग मैरोल है ना, वो 206 सी क्या है, 194 क्यों क्या है? अरे भाई साहब
गोल ऐसे नहीं वो अभी इन्होंने लिखा है, ये पता नहीं ये अब बनाने लगे हैं आशीष भाई, ये सेक्शन हर एक टीडीएस के सेक्शन में लिख देते हैं कि अगर कोई डिफिकल्टी आई इसको समझने में तो सीबीडीटी हमारे लिए संकट मोचन का काम करेगा। हाँ, इसमें भी लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है ना, तो उसकी हाँ। वेट करिए कपिल गोयल को मत करिए तंग मेरे को छोड़िए। But I am very happy to receive this question. I am telling you brother, हम लोग जब लॉ बन जाता है ना, और उसमें देखिए क्या है, this kind of tedious provision itself to my mind humble view is ill conceived, क्योंकि इसमें 1000 गुना की प्रैक्टिकलिटी, जितना आशीष ने बोला, भाई ने बोला, आपने बोला, और एक आशा मैडम भी बोल रही है कि गुल साहब बायर सेलर पता नहीं कितना जान पाएंगे भी नहीं जान पाएंगे, तो इन्होंने 194S तो डाल दिया है। अब मीडिया में तो अलग ही डिबेट चल रही है कि साहब ये इससे लीगलाइज हो गया नहीं हो गया। अरे भाई इसका इनकम टैक्स एक्ट का कोई लीगलाइज से क्या लेना देना। आप समझ रहे हैं, अभी तो हम इसी बात से कर रहे हैं कि इनकम टैक्स एक्ट में चार्जिंग मैकेनिज्म कहाँ है, कंप्यूटेशन मैकेनिज्म कहाँ है, टैक्स रेट कहाँ है आशीष जी, और टीडीएस का इन्होंने जबरदस्ती डाल दिया। मतलब टैक्स अभी चार्जिंग और कंप्यूटेशन तो क्लियर नहीं हुआ और एंजाइटी देखिए टीडीएस आ जाए। Rather I will complete my statement with this. कपिल सर, जब आपका ये बजट वाला सेशन पूरे हो जाए ना अगले कुछ दिनों में, उसके बाद में कभी समय होएगा तो एक बार 15 मिनट इस पे मैं 1-to-1 डिस्कशन करना चाहूंगा आपसे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल थोड़ा सा आइडिया है इसका कैसे क्या होता है। I would be very happy आशीष भाई। तो एक बार I will connect with you some point of time. आशीष भाई I will be very happy. I am rather glad brother. You are a very darling brother. I will do this. Now next set of changes brother is मैं कौन सा लूं मैं सोच रहा हूँ। मैं दिलेमा में हूँ क्योंकि मेरा टाइम भी अभी 15-20 मिनट में हो जाएगा। मैं अगला चेंज जो लेना चाह रहा हूँ वो ले लेता हूँ, ये 139 वाला ले लेते हैं सर, अपडेटेड रिटर्न का पहले 139। सुमित भाई सेक्शन 139 सब सेक्शन 8 कैपिटल ए और सेक्शन 140 कैपिटल बी। अब बहुत लोगों ने अभी कहा कि साहब ये कोई सेटलमेंट कमीशन जैसा चीज है या ये कोई मिनी सेटलमेंट है या ब्ला ब्ला ब्ला। मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ सर 139 सब सेक्शन 8 है, कंसेप्ट का सिर्फ एक ही मात्र ऑब्जेक्टिव है जो मुझे समझ में आया, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन। जैन साहब यस, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, ये हम क्या जो मर्जी इंग्लिश झाड़ ले, सॉरी उसका सेंस यही बनेगा कि सुगंधी साहब पैसा दे दो हमें, तो हमें तो रोकड़ो चाहिए, रोकड़ो करण भाई रोकड़ो चाहिए, तो वो सुन नहीं रहे मुझे। एडिशनल टैक्स है तो रिटर्न, वो राजस्थानी बोलते हैं पीसो दे दो हमें, तो पीसो चाहिए, तो पीसो क्या, सॉरी से बोल रहा हूँ 139 सबसेक्शन 8A 12 महीने तक 25%, उसके बाद 50%। तो वो तो बिजनेस मतलब जैसे होता है ना कि जैसे हाँ ठीक है, पिछली बार क्या कह रहे थे सर कि 139 सबसेक्शन 4 का बिलेटेड रिटर्न का रिवाइज रिटर्न का टाइम लिमिट कम होना चाहिए, 3 महीने कम कर दिया था सुजंती साहब, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। अब कह रहे नहीं उसके पास ही टाइम कम है, उसको थोड़ा टाइम और ज्यादा दे देते हैं, ये उन्होंने मेमोरेंडम में लिखा है। हाँ मेमोरेंडम में लिखा है ना जैन साहब, बिल्कुल लिखा है। यार ये क्या मतलब, ये इसका मतलब तो वो आदमी ही इज ईटिंग हिज वर्ड्स, जो किसने पहले लिखा था या तो वो गलत था, ये जो ये लिख रहा है ये भाई सब कुछ अजीब है। तो क्या कह रहे हैं 139(1) आपने फाइल कर दी या नहीं करी सुमित भाई रेगुलर रिटर्न, या आपने 139(4) बिलेटेड रिटर्न करी या नहीं करी, या आपने रिवाइज रिटर्न फाइल करी या नहीं करी। भाई साहब उनको इससे मतलब नहीं है, वो कह रहे हैं हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन मतलब करदाता की इच्छा है, अगर उसको चाहिए तो वो 139(8) फाइल कर सकता है। अगर उसने रिटर्न फाइल नहीं करी 139(1) की, 4 की, 5 की या करी है तो भी, अगर उसको लगता है कि उसकी कोई इनकम ऐसी है जो उसको उस पर टैक्स देना था और वो रह गई है, 139(8) की गाड़ी वह व्यक्ति नहीं पकड़ सकता है जिसको डिपार्टमेंट से कुछ चाहिए, जिसको देना है वही उसका स्वागत है, जिसको जो मांग रहा है वो नहीं आए, वो जाए अपने घर वापस राधे राधे करके। मतलब सुजंती साहब आपको रिफंड नहीं मिलेगा, आपका लॉस लूस नहीं मिलेगा, आपकी इनकम कम नहीं होगी। आप कुछ देना चाहते हैं, आपका स्वागत है दोनों हाथों के साथ गारलैंड करके, बट आप कुछ मांगना चाहते हैं तो आप अपने घर जाइए और बाकी बिहारी को याद करिए। अब इस 139(8) कैपिटल ए आपको क्या बताता है, आपको एलिजिबिलिटी बताता है कि आप कब एलिजिबल होंगे 139(8) की गाड़ी पकड़ने के लिए। कब होंगे? आपके ऊपर सर्च नहीं हुई होनी चाहिए, आपके ऊपर सर्वे नहीं हुआ होना चाहिए, आपके केस में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आनी नहीं चाहिए फॉरेन कंट्री से जो सेक्शन 90 है उसमें, आपके ऊपर कोई ऐसा पीएमएलए का, बेनामी लॉ का, ब्लैक मनी लॉ का कोई इंफॉर्मेशन नहीं आना चाहिए आपके केस में। तो 139(8) की गाड़ी पकड़ने के लिए सुमित भाई मेरे ख्याल से 12-13 एलिजिबल नेगेटिव क्राइटेरिया है। अगर आप उनमें आगे तो आप रिटर्न नहीं फाइल कर पाएंगे। मैं पूरा रट्टा नहीं मार पाया हूं, मोटा मोटा आपको बता रहा हूं। उसमें 3 प्रोवाइजो है जैन साहब, 139(8) में पहला प्रोवाइजो, दूसरा प्रोवाइजो और तीसरा प्रोवाइजो। हाँ ये मैंने याद आ गया। तो आप वो तीनों प्रोवाइजो पहले पढ़ ले, फिर अपने क्लाइंट को एडवाइस करें कि तुम एलिजिबल हो या नहीं हो। इतना पढ़ लेंगे तो ये समझ में आएगा कि वो एलिजिबल है या योग्य वर है या नहीं है। योग्यता तय हो गई। पहले तो 139(8) से कुंडली मिलाइए, योग्यता चेक करिए, तीनों प्रोवाइजो पढ़िए और उसको समझिए।
फिर जब करण भाई आप ये सब कर लेंगे, तीनों प्रोवाइजो पढ़ लेंगे और आप एलिजिबल हो गए, आप कहेंगे ऐसा कौन एलिजिबल होगा भाई, ये तो बता दो। भैया मुझे समझ में आया जिसके ऊपर कभी अभी अभी आफत आई नहीं है, आने वाली, जैसे इनकम टैक्स की हमें पता लगता है ना, ये आदमी बड़ा हो गया और इसका इनकम टैक्स का भी अभी तो छापा पड़ा नहीं है सुमित भाई, और ये आदमी कहीं ना कहीं आ सकता है, समस्या आने वाली है, रास्ते में है, जैसे सम्मन आ गया तो सुजंती साहब, तो उसको आप बोल सकते हैं कि भैया तू अपना ड्यू डिलिजेंस करवा ले हमारे से और हमें फीस जरूर दे दे, हम तभी ड्यू डिलिजेंस करेंगे और तभी तेरे को अपडेटेड रिटर्न बना कर देंगे, वरना बिना फीस के हम कोई काम नहीं करेंगे, सॉरी राधे राधे, बुरा ना माने। 139(8)A, क्योंकि उसको पढ़ के बताना ही सर अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग रहेगा। अब बता देते क्योंकि गवर्नमेंट तो हमें कुछ देगी नहीं उस चीज के लिए, तो हमें वो तो ना देगी, हमने 139(8) में टैक्स जमा करा दिया, जैन साहब हमें कोई पारितोषिक मिलेगा आपको, मेरे को सर्टिफिकेट कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। चलिए अब आप जब 139(8) की रिटर्न बनाएंगे तो उसका सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो कैलकुलेट करेंगे वो 140B नया सेक्शन है, 140B, पहले 140A था जो नॉर्मल रिटर्न के साथ आप बनाते हैं सेल्फ असेसमेंट सुमित भाई, अब 140B। इसमें आपको 4 तरीके की चीजें देनी पड़ेंगी जैन साहब, जो आपने पढ़ लिया होगा। एक तो टैक्स जो उस पे बनता है एडिशनल इनकम पे, एक उसका ब्याज, एक फीस, फीस मुझे लगा ये वो फीस है जो पेंडिंग रह गई, जो पहले आपने कुछ नहीं दिया वो अब आप देंगे, लेट फाइलिंग फी, लेट फाइलिंग फीस, राइट राइट। और चौथी चीज एडिशनल टैक्स जो उन्होंने पेनल्टी के रूप में डाला है, मुझे लगता है ये बड़ा स्मार्ट बिजनेस सेंस है इसको करने का। वो कहते हैं एडिशनल टैक्स आपको देना होगा अगर आप 12 महीने के अंदर रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अपडेटेड रिटर्न 12 महीने मतलब फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, अगर आपने अपडेटेड रिटर्न फाइल करी विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, तो आपको एडिशनल टैक्स सुजंती जी देना है 25% ऑफ द टैक्स एंड इंटरेस्ट, 25% ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट। और अगर आपने क्या नाम वो रिटर्न फाइल करी अपडेटेड रिटर्न सॉरी 12 महीने के बाद और 24 महीने के अंदर, तो आपको 50% की दर से वो देना है एडिशनल, वो एडिशनल टैक्स। तो भैया 50% और 25% मुझे लगता है जैन साहब टैक्स भी देंगे, ब्याज भी देंगे और एडिशनल टैक्स भी देंगे। तो ये बन के जो पैकेज बनेगा, ये पैकेज बनेगा जैसे शादियों में होता है पैकेज, आप इस पैकेज को देंगे, पैसा दे देंगे, रुपया दे देंगे, रोकड़ा दे देंगे, वहां जमा करा देंगे, तभी आपका 139(8) का रिटर्न कबूल होगा, वरना उसको कबूल नहीं किया जाएगा। कबूल समझ गया आप? 140B का टैक्स, ब्याज और एडिशनल टैक्स दे देंगे तभी आपका 139(8) का रिटर्न एक्सेप्ट होगा सर। और 140B में बहुत डिटेल्ड मैकेनिज्म है। रोकड़ा जमा कराने से पहले मुझे जहां तक समझ में आया कि आपको असिंग ऑफिसर से ये भी पूछना पड़ेगा कि आपके अगेंस्ट में कोई इंक्वायरी तो कंडक्ट नहीं है, जो उसके पास ऐसी ये आपकी सेंस जो कह रही है बिल्कुल सही है। हम बोलिए सॉरी, आपकी ऐसी इंफॉर्मेशन उसके असिंग ऑफिसर के पास तो नहीं है, कोई भी अदर एजेंसीज की जो यहाँ पे प्रॉफिटेड हो, वो पहले आपको वहां से क्लियरेंस लेना पड़ेगा तभी आप एटीएम में जा सकते हैं। मेरा ऐसा ओपिनियन है। आपका कहना इसलिए सही है कि हमें तो कुछ सपने तो आ नहीं रहे, क्योंकि हमें बताते थोड़ी ना जो उनके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो आप कह रहे हैं पहले एनओसी लेना पड़ेगा, एनओसी लेना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि थर्ड प्रोविजो में क्लॉज सी में उन्होंने ऐसा लिखा है, सैम हैज बीन कम्युनिकेटेड टू हिम। भाई साहब मुझे समझ में आ रहा है आप जो कह रहे हो, मैं ऐसा नहीं है, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ पूरा। यू आर राइट, योर पॉइंट मेक सेंस ब्रदर। अब पता नहीं जैन साहब देखिए क्या है, एक तो मैं पैसा दे रहा हूँ, अपने आप को वॉलंटरी कंप्लायंस कर रहा हूँ, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए काम कर रहा हूं। सर ऐसा नहीं है कि हम ऑफिसर के सामने पहले ही से बता दे रहे कि सर क्या कहते हैं ये मेरा असेसिंग जो ये है कि ये डिफॉल्टर वाला है। नहीं, ये लोग तो क्या है, मेरे अकाउंट में अगर इन्फॉर्मेशन आती है कायदे से, तो इसको देख के ये लगता है कि ब्रदर इनको आप टेक्नोलॉजी के युग में, डिजिटल एरा के युग में इनको ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर जिस समय आती है वो हाथ के हाथ मेरे पोर्टल पे डाल देनी चाहिए। नहीं, पोर्टल पे तो वो क्या कहते हैं जो कंप्लायंस है एआईएस, वो तो 30 जून को जनरेट होना है सर। मैं कह रहा हूं अगर इसको सेक्शन को प्रैक्टिकली कार्यान्वित करना पड़ेगा, तो वो जो आपने बात बोली है उसका सेंस तो तभी बनेगा ना जब इनके पास इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होगी, तो उसको हाथ क्या डिस्प्ले करे मेरे अकाउंट, एटलीस्ट जनता को नहीं, मेरे को एटलीस्ट। पर वो इतनी ट्रांसपेरेंसी आएगी नहीं आएगी। यू आर राइटली सेइंग कि मिस्टर गोयल वी डोंट नो, और उसके लिए फिर आपको एनओसी, उसको पहले एक बार ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा भाई हम इतना टैक्स देते हैं, कल को पता चले ये उसको भी रख ले और हमारा वो रिजेक्ट भी कर दे। यही कहना चाह रहे हैं ना आप? हाँ बिल्कुल सही सर। देखिए क्या है क्या नाम है जैन साहब, अब इन्होंने बनाया, दे विल हैव देयर ओन एफओक्यूज एंड थिंग्स। अब इन्होंने बना दिया, ये मैडम ने एफएम ने बोला भी है कि हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। तो मुझे लगता है इसको एक सक्सेसफुल बनाने के लिए ये कुछ ना कुछ उसको आगे बढ़ाएंगे, वरना ये ऐसा तो नहीं चेंज करेंगे कि वो सिर्फ थ्योरेटिकल रह जाए। दैट इज माय सेंस। 139(8). एक केस ऐसा भी है सर, जैसे कि जो कलकत्ता से गोल्ड आता है दिल्ली, अब लड़के तो पकड़ गया, उसके नाम में तो कुछ है नहीं। सॉरी, फीमा के रूल तो लड़के के ऊपर एप्लीकेबल हुए, हमारे एसएससी के ऊपर तो एप्लीकेबल नहीं हुए। उसमें जैन साहब एक जगह लिख दिया डिसेबलिंग क्लॉज में कि अगर किसी थर्ड पार्टी के ऊपर किसी और की सर्च से कोई मटेरियल मिलता है तो भी वो डिसेबल हो जाएगा। सर्च हो ही नहीं ना सर,
आप समझे नहीं, उन्होंने एक जगह ये लिख दिया, मैं बता रहा हूँ, सेकंड प्रोवाइजो आप पढ़िए, उसके दोनों सेकंड प्रोवाइजो के अंदर 4 एंट्रीज हैं, उसमें 2 एंट्रीज पढ़िए, फाइनेंस बिल 2022 में कह रहा हूँ, उसमें उन्होंने लिख दिया कि अगर ये 153C वाला केस होता था, जो मैं बोलता हूँ, आप समझ गए मेरी बात, मैंने पढ़ा, आप जो बोल रहे हो इट मेक सेंस कि कपिल जी क्या ये सिर्फ सर्च वाला जिसके ऊपर भी है उसको डिसेबल कर रहे हैं? नहीं, ये उसको भी डिसेबल कर रहे हैं कि सारा इनके पास कोई, पर उसमें लिख रहे हैं नोटिस हैज बीन इश्यूड to any other person in whose case search has not been conducted, but some other material from somebody else his material is found, information is found. पर उसके लिए क्या चाहिए, मुझे लगता है जो आप बात बोल रहे हो उसमें नोटिस इशू होना चाहिए, तभी वो डिसेबलिंग होगा। अगर नोटिस अब तक इशू नहीं हुआ, लेटेस्ट 153C, अब तो नया ला 148 आ गया, तो इसका मतलब जहां 148 इशू होगा तभी बात बनेगी ना डिसेबलिंग की, वरना डिसेबल 148 के लिए इसमें बात ही नहीं करी उन्होंने। नहीं, आप बात नहीं समझे, उसने लिखा नहीं है, पर नए लॉ में तो सर्च में भी ब्रदर 148 ही होता है ना, यू नो। आप कनेक्ट करो नए लॉ में 148 के एक्सप्लेनेशन 2 को एक हाथ में रखो, और जो 139(8)A का सेकंड प्रोवाइजो है जैन साहब, उसको दूसरे हाथ में रखो, तो आपको जो 2 कंडीशन इन्होंने ऐड करी है 139(8)A के सेकंड प्रोवाइजो में, वो आप हूबहू 148 में भी है एक्सप्लेनेशन 2 में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये कहते हैं कि अदर पर्सन को हमने अगर बुला लिया है पार्टी में, तब वो नहीं आ सकता 139(8)A की पार्टी में। अगर आपको उन्होंने न्योता नहीं भेजा, प्यार लव लेटर नहीं भेजा, तब आप जा सकते हो, तब जा सकते हैं। ठीक है सर। तो ये मेरा कहने का मतलब ये था, 139(8)A आपको बोला, ये 140B बोला, और तीसरा सर इसमें एक और जैन सब चेंज है, 153 के अंदर इन्होंने अलग से टाइम लिमिटेशन ऑफ असेसमेंट बताया है कि जब भी अपडेटेड रिटर्न फाइल होगी उसके 9 महीने में असेसमेंट हो सकता है। दैट इज सेक्शन 153 सब सेक्शन 1A, 9 महीने में असेसमेंट हो सकता है, जिस फाइनेंशियल ईयर में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करेंगे उसके एंड के 9 महीने तक। 9 महीने। तो सर मेरे को क्या है कि 22 हो गए हैं, 8:30 7:30 हो गए, मुझे दूसरा सेमिनार ज्वाइन करना है। मैं आपसे जैन साहब थोड़ी सी माफी चाहूंगा, क्योंकि क्या है अगला सेमिनार में बोल रहा हूँ, मेरे को क्या है 1 घंटा वहां पर भी बोलना है। इफ यू कैन काइंडली एक्सक्यूज मी नाउ, एंड क्यों सॉरी, I tried my level best to discuss all the important things with best of my abilities, but I have already felt excuse and apologies to my learned viewers कि ये बजट इतना लेंदी है सुमित भाई कि हम लोग क्या करें बताइए। मेरे लिए, हम किसी के लिए भी ह्यूमनली वी कांट बिकम रोबोट्स एंड टेल्स, पर एनी हाउ अब किसी और दिन हमारी भेंट वार्ता होगी, बिल्कुल होगी सर। प्रभु की कृपा बनी रहेगी। सर किसी और दिन डिटेल्ड जो है ना, क्लोज बाय क्लोज जो है, इसके ऊपर एक सेशन रखा जाएगा। वो 4-5 बार रखना पड़ेगा करण भाई। मैंने अभी किसी को बोल रहा था, पता नहीं क्या, कि इस बजट के बाद तो आपको, जैसे मैंने 4-5 हेड में आशीष जी बताया ना इनकम टैक्स एक्ट के लिए, तो आपको हेड इससे तो सर इसे एक्सप्लेनेशन कोई पढ़ने में काफी टाइम लगेगा। एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा है इस बार तो। वैसे मैंने आपको ऐसे ही, आपको क्या लगता है कपिल भाई ऐसे ही बोल रहे होते हैं कि मैंने क्यों बोला एक्सप्लेनेशन का मौसम चल रहा है यार? एक्सप्लेनेशन के लिए भी एक्सप्लेनेशन आई हुई है। मौसम के अंदर आम खाने का था या कुछ अच्छी चीज खाने का, तो अभी आप एक्सप्लेनेशन पढ़ते रहो भैया, अपने आप को थोड़ा सताओ, क्योंकि क्लाइंट का काम कर रहे हो, उसको बताओगे कैसे बनना, बताओ। चलो फाइनेंस बिल जब तक फाइनेंस एक्ट नहीं बन जाता तब तक 1-2 बार पढ़िए आप, और उसको अपना माइंड ब्रेनस्टॉर्म करिए। आई एम हम्बली saying to you that yes I know कि there are some changes। अब 3-4 जगह सेमिनार सवेरे से चल रहे हैं, पिछली बार भी मैंने कल भी बोला था, कुछ मैं कोशिश करता हूँ सुमित भाई की अगर कुछ जगह कुछ रह जाए तो दूसरी जगह कवर कर दूं, कुछ जगह रह जाए तो कुछ जगह कवर कर दूं। एनीहाउ प्लीज allow me to take leave and I am thankful to all of you। कपिल सर लास्ट का आधा मिनट बैक टू बैक इतना बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला, यानी कि आज सुबह से आपको देख के ही पता लग रहा है कितने टाइम से आप कंटिन्यूस जो है डेलिब्रेशन दे रहे हैं आज मॉर्निंग से, और उसके बावजूद भी आपने टाइम दिया। आपको पहले ही पता था कि मेरा बैक टू बैक सेशन है आज, फिर भी आपने एक रिक्वेस्ट पे हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जरूर आप ही से डिस्कस करके इसको सीरीज वाइज जो है ना स्टडी करने के बाद फिर सीरीज वाइज करिए, सीरीज वाइज रखेंगे, आप ही से सजेशन लेके कि किस तरीके से प्लान किया जाए, ताकि सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके, प्रॉपरली इसकी अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि क्या क्या चेंजेस आए और उनको कैसे अडॉप्ट करना है, कैसे उस पर वर्किंग करनी है। आशीष भाई कुछ कहना चाह रहे थे प्यारे भाई, बोलिए आशीष भाई। कपिल सर मैं इतना ही बोल रहा था कि इनकम टैक्स हमको समझ में नहीं आता, कभी सुनते ही नहीं है। आज आपको सुन के ऐसा लगा कि हाँ भाई एकदम साधारण सरल शब्दों में कोई चीज को समझाने का तरीका जो है ना, वो आपका तरीका बहुत ही अच्छा लगा, और सारी चीजें बिना कुछ इनकम टैक्स के बैकग्राउंड के भी समझ में आ गई एक बार में। ऐसा है। चलिए ये तो मेरे पे आशीर्वाद है, मेरे लिए प्रोत्साहन है ब्रदर। आई एम थैंकफुल फॉर दिस एनलाइटनिंग मोटिवेशन एंड एनकरेजिंग मोटिवेशन टू मी ब्रदर। थैंक यू, स्पेशल थैंक्स टू कपिल सर फॉर योर वंडरफुल प्रेजेंस। भाई ऑल द बेस्ट एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। Thank you Ashish ji for your deliberation also. Thank you Madhukar sir, and thank you to all participants. Thank you very much. Thank you.